Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Sir, I have two questions. If it is any query, we want to deal with the query at the end today. Okay. Yeah. No, they're very two small questions. Let we deal in the end Okay. just for today. Huh? Because there is a target to complete in which you will exhaust so that later on you will not be going into, I will not say illogical, but you will be direct and I will be saying direct because by that time you will fully exhaust. Otherwise, we will waste our time in the beginning only. Huh? So first of all, we are discussing one adjustment relating to group accounting provisions for unrealized profit. In short, we say PUP, provisions for unrealized profit, which will take around maximum 15-20 minutes to discuss. It's a 5 minutes thing, but maybe giving example, scenario and all that will take around 15-20 minutes. Then we will solve one question which came in earlier exam. You will say, sir, without doing any problem, believe me, that problem will be cut piece and masterpiece problem. And when I will be explaining that problem, the answers and everything, solving the question in front of you, like you are sitting in the exam hall, and I will revise whatever I taught in last 1.5 months.
with that problem, my objective is to explain you everything, whatever I taught in last 1.5 months, because in the question, there will be different topics will be correlated. Non-current assets, maybe leasing, maybe deferred tax, maybe anything. I can't say. That depends upon what is included in the question. So many things we will discuss slowly. That entire one problem will take 3 hours to complete. 3 hours. You will not be getting an exam 3 hours. The purpose is not just to solve problem. The purpose is to revise whatever we studied in 1.5 months. After that, whatever query anybody has, I am sitting here till whole day. No problem. Maybe for me, it is becoming 12:30, 1 o'clock, 2 o'clock, doesn't matter. But I am here. Whatever your queries are there, you go on asking. We will finish off all the query and then we will wind up the class. Next class, Friday, we will continue this group accounting, some here and there and PL account. But with next class, the group accounting will not finish. That confidence will not come. So we will have one extra class on Saturday. At what time? I will tell on Friday. Let me manage my things. So we will have one extra class so that we don't carry forward the group accounting in the next week. So you can say that on Saturday, we will finish off group accounting, whatever the things are there. Next week, Tuesday, Friday, we will do financial instruments. The financial instruments, you can say on this Saturday, the date is 9th. So on 15th of Friday, we will cover up financial instruments, which somebody was saying in the last class, or when you will do derivative and all that. Then there are some here and there, some small topics are there, which will take 1 to 2 class. So you can see that 15th when we finish, mota moti on Tuesday, which will be 16, 17, 18, or maybe one class more. We will finish off everything by around 28th and we will focus maybe 21st also, 2021. And for last 10, 15 days, we will focus on mock papers, mock exams and everything. That's my schedule going forward, because now if anybody has not booked the exam, you can't book. The date is gone. Last date was yesterday, 4th of November, to give exam in December. So if somebody is not giving exam, it's gone. You can't give. And those who are not giving exam, generally they will not be attending the classes also, because they may be thinking, but they have discounted in their mind, भाई अभी तो हम exam दे नहीं रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो पढ़ना भी क्यों है? फिर उनको याद आएगा जून में, उस समय बात करेंगे. If they are ACC student, they will start thinking about March and all that. That's different thing. जो लोग हैं इसलिए शेड्यूल बात कर रहे हैं कि in coming 2 classes we will finish group accounting, then 2 classes financial instruments, then 2 classes here and there, blah blah, whatever is there. Then last 10 to 15 days, mock papers, mock test and everything. And we will be giving exams. Okay. So I am taking one single class extra on this Saturday. And in this class, if I will feel that there is something like, suppose in leasing, lesser accounting or something which is related with IFRS, I will say FR student at the end 1 hour, 1.5 hours to leave. And to leave in the sense, it's not that they cannot hear. But if that is not in their syllabus, they can leave. I can teach for 1.5 hour IFRS student extra. I will decide. But that's sure that by around 20th or 21st, everything will finish. And we will study mock papers and everything in the last 10, 15 days, which we always do in every quarter, in every exam. And we will be giving the exam. Okay. Those who are not giving exam, my point of view, they should be thinking they are giving exam in December. Then only they will be able to give exam in March or June. If they discounted in their mind, they are not giving exam, they will never be giving exam. That's my experience of last 30 years, not this batch. Because that's the problem. We become lenient, we don't give exam, and now next time we are even worse prepared. Because something we know, something we don't know, that problem happens. So keep in mind that you are giving exam in December. और कोई बकबक नहीं कर रहे, किसी का सुन भी नहीं रहे, सीधा आगे चालू करते हैं. कोई बकबक करने का टाइम नहीं है, ठीक है? Now, we studied around 3-4 classes back. IS2 inventory. Inventory will be valued at cost or NRV, whichever is lower. Why? Somebody asked different types of questions also in the class.
cost or NRV, whichever is lower. Suppose my business is purchasing computer, selling computer. Or my business is Maruti company, manufacturing motor car and selling motor car. If my business is purchasing computer, selling computer, for me, computer is not an asset. It's inventory. That's my inventory. Now, normally, if I am purchasing computer for say 50,000 INR, the sale price is definitely going to be greater than 50,000. I am not a Kalidas. I am not a Beukuf. That the goods I am purchasing at a higher price and I will sell at a lesser price. Similarly, if the Maruti company during this puja time, Diwali time and all that, the car sale in India has grown by around 35%, festive season. The car companies has offered good discount, excellent discount, whether it's Hyundai, whether it's Maruti, whether it's Honda, any company. Lovely discounts were there. So there was, with the discount, the customers were attracted. But that doesn't mean that the sale price of the car after the discount is less than the cost price. Because Maruti, Hyundai, Honda are not Kalidas. Maybe they are generating less income, but the sale price is greater than the cost price. That's normally is happening in every business. Sometime, bold from the blue, because of something happened, because of some market situation, sometime something happened. Then in that case, we can say that the sale price may be less than the cost price. What are those sometimes? Suppose there is some accident happened in our business and the inventory destroyed, they are affected. Now when they are destroyed, not fully, but their sale price is less than the cost price. Theft, fire, whatever. Or maybe there are some new development in the market. New technology, new innovation, new thing came. So now nobody is interested in the old thing. It's actually the old thing, there is no demand at all. Sometime it may happen that the sale price is less than the cost price. But this is not a normal thing. In any business, sale price will be greater than the cost price. But if this happens, even though we have not sold out the inventory, suppose I have computers which I purchased for 50,000, which I am going to sell, but the technology in the market has changed. And because of that, the computer will be sold out at less than 50,000. This normally doesn't happen. This happened exceptionally with me. And I am standing at the end of the year on 31st December. The computer cost price I purchased for 50,000, but I know that I will be able to sell at less than 50,000, say 45,000. What is the proof for that? Suppose the computer after 31st December, on 1st or 2nd January, 5th January, they are sold for 45,000. So there is, I mean to say, there is no projection required. Already we know that we have the computer on 31st December and it is sold out next year at 45,000. So nobody need to give any proof that how come we say that the sale price is less than the cost price. It is proved, man. It is already sold out at 45,000. So when we will record for 31st December closing stock, the closing stock we don't record at 50,000. We will record 45,000. How we will record? When we prepare PL account, sales minus cost of goods sold. The cost of goods sold is opening stock plus purchases minus closing stock. The closing stock value in place of 50,000, I will consider 45,000. So from opening stock and purchase, in place of deducting 50,000, I am deducting 45,000. So when I am deducting 5,000 less, the cost of goods sold will be 5,000 more. Purchase and opening stock will be increasing by 5,000 because I am deducting lower value of closing stock. Cost of goods sold goes up, so the profit will be less. When the cost of goods sold is higher, profit will be less. And that closing stock, I will be recording in the balance sheet because that is not yet sold out. I will be recording under current assets 45,000. Somebody was asking in earlier classes,
How can you say that you are recording loss in the, Arey bhai, by recording closing stock at a lower value, already the cost of goods sold is increasing. Already the profit is down by 5,000. And in the balance sheet, I am recording closing stock value 45,000. At the same time, outside the PL account balance sheet in notes to accounts, I need to mention that in the organization, there is some inventory of computer which cost 50,000, but which NRV is 45,000. What is the reason for this? And the 5,000 loss recorded in the PL account under cost of sale because the NRV lower than the cost. Why it needs to be written in the notes to accounts? Because it is not a normal thing. You are doing a business. You are purchasing something for 50,000 and you will be able to sell at 45,000. It's a very big thing. But out of the total inventory, for how much inventory this is relevant? Out of the total inventory, for how much inventory this is relevant? I mean to say, maybe I have 5,000 computers and for 2 computers this is happening. Chalega bhai. But out of 5,000, 2,000 inventory is getting affected. It's very big thing. So notes to accounts should mention this. By cost of goods sold, the closing stock are adjusted because of NRV. This, the investor or anybody looking at the financials should keep in mind before going into any relationship with the company. For that reason, it is a rule that IS2 says that the inventory should be valued at cost or NRV, whichever is lower. The lower value will adjust your cost of goods sold. The lower value will be coming in the closing stock in balance sheet, and the lower value you need to report in the notes to accounts properly. That is IS2. Then why it is coming here? The same thing we are discussing here, no different than IS2. That means maybe you are thinking group accounting. I'm not telling group accounting, man. I'm saying in group accounting, IS2 application. Why? Suppose I am in the business of purchasing and selling computers. Okay. Now, one of the computer I am selling to my wife. One of the computer I am selling to my wife, to my son, to my mother, anybody yaar, ghar ka baat hai. Now, when I will sell normally the computer, then I will sell at greater than 50,000. That's my business. I will not be selling at less than 50,000. So to my wife also, I am selling say at 60,000. 50,000 computer, I am selling to my wife for 60,000. So Prakash Saraf is recording 10,000 income. 50,000 cost, sale 60, so 10,000 income. My wife is recording cost of computer 60,000. Because for her, whatever is my sale price, is cost for her. So for Prakash Saraf, there is a 10,000 gain and wife is still having the computer. Wife has not sold out the computer. Bolega wife, why she will sell? She is also selling computers, man. It is not a computer asset for him. That is inventory for him. I am selling to her and then she will be selling in the market. But she has not yet sold out in the market. So to Prakash, there is a profit of 10,000. And the computer is still there with my wife. What is the income in this transaction to Saraf family, to Saraf group? My selling computer to my wife from 50 to 60,000. What is the income to Saraf family in this transaction? I'm asking to all of you. Now, Soman Das, don't go into technical meaning, sir. I'm not discussing any technical. Simple. You are selling something to your wife. So what is the income of the family? So Rohit ji is saying that income of the family 10,000. यानी कि मेरी वाइफ दुनिया के बाहर की है, वो और मैं अलग है. यार क्या यार रोहित जी यार, वो चालू किया सोमेन दास ग्रुप ने लैंड टैन, वो सब नहीं बोलना था यार. अरे भैया अगर ऐसे होगा तो एक काम करते हैं, आप सबका पढ़ाने के बजाय अपनी वाइफ को ही बैठा देते हैं, भाई तुम ही पढ़ लो और उससे ट्यूशन फीस ले लेते हैं, तो इनकम हो जाएगी फैमिली को. जितना भी अपना रिलेटिव है ना, भाई बंधु वगैरह सबको बैठा लेते हैं, ट्यूशन फीस ले भी लेते हैं, इनकम हो जाएगी. तो आज से सबको यही करना चाहिए यार. इनकम तभी होएगी जब सराफ फैमिली के बाहर सामान बिकेगा. मेरे वाइफ को बेचने से कोई इनकम नहीं होएगी. If I will say inverse, I'm not talking any technical term, group accounting, this, that. I'm talking plain, simple family thing. आपके घर में भी बीवी, बच्चा, भाई, बहन है,
आप फैमिली के बारे में सोचिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है। आपको जो तरह की फैमिली सोचनी है सोच लीजिए, लेकिन उठ पटांग बात मत सोचिए। हाथ जोड़कर विनती है रोहित जी, उठ पटांग बात नहीं सोचिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको प्यार से सुनिए। फैमिली के लिए इनकम, तो आप बोलते हैं 10,000 यार, दिल को चोट लग जाती है। तो क्या समझाएं कि अगर सिंपल बात में भी हम लोग बोलेंगे 2 और 2 5 होता है, तो फिर 4 कब बोलेंगे यार? यानी कि दिमाग खराब होकर रखा है, इसीलिए कुछ नहीं समझ पाते हैं। दिमाग को सीधा करिए पहले। इफ माई वाइफ इज डूइंग दिस, देन ऑल्सो देयर इज नो इनकम। If my wife is selling a computer of 50,000 for 60,000 to me, then there is no income in the family. इनकम तब होएगी जब दुनिया को सेल करेंगे। घर पे एक दूसरा को सेल करने से कोई इनकम नहीं होती है सर। पेरेंट और सब्सिडियरी प्रकाश और विदिशा ही है। इन अ कॉर्पोरेट, पेरेंट एंड सब्सिडियरी आर फैमिली, आर प्रकाश एंड विदिशा। ये मेरा पहला दिन से एग्जाम्पल चल रहा है। आपको जो रिकॉर्डिंग वाला प्रीवियस बैच, सब में एक ही बात, प्रकाश, विदिशा, विवान, मदर, फादर, यही बोलते रहता हूं मैं। किस लिए? आपको तकलीफ नहीं हो, यू डोंट फील एनी पेन, यू अंडरस्टैंड इन 1 सेकेंड। फिर भी साला नहीं समझते। तो और तो मेरे को बताना आता नहीं है यार, कि भाई कोई इंग्लिश लैंग्वेज है, ये लिखा हुआ है, आपको इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, बात अलग है। लेकिन हम तो कॉमन बात कर रहे हैं यार, फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो इतना सिंपल कि इसके नीचे जाना आता नहीं, और आता नहीं, मेरे को लैंग्वेज नहीं आती। एंड इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, फारसी, देयर इज नो लैंग्वेज आई एम यूजिंग। So when I am using simple example and we are not getting the concept, how we will apply that thing in this technical concept, parent and subsidiary? फिर आपके मन में आएगा पेरेंट सब्सिडी प्रकाश विदिशा थोड़ी ना है। अरे मैंने बोला है पेरेंट सब्सिडी प्रकाश विदिशा है, बिकॉज प्रकाश विदिशा में क्या है, क्या चीज है? उसका एसेट्स मेरा एसेट्स कंट्रोल, वाइफ का एसेट्स मेरा अलग अलग नहीं है यार, सब मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं। वेयर इट शुड बी इन्वेस्टेड, वेदर इट विल गिव रिटर्न और नॉट, सब मेरे को ही देखना है, उनको नहीं देखना है। सलाह मशवरा उनसे कर सकते हैं, दैट आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, अदरवाइज शी विल फील, बट नॉर्मली डिसीजन तो मेरे को ही लेना है यार। वैसे ही पेरेंट और सब्सिडियरी में डिसीजन पेरेंट को लेना है। सब्सिडियरी कंपनी अलग है, दे हैव द डायरेक्टर्स, दे हैव द शेयर होल्डर, टिल लेने गया। बात है पेरेंट सब्सिडियरी का डिसीजन कौन ले रहा है? पेरेंट। वो कौन है? प्रकाश और विदिशा। सो इफ पेरेंट इज सेलिंग एनी गुड्स टू सब्सिडियरी और सब्सिडियरी इज सेलिंग एनी गुड्स टू पेरेंट, प्रकाश इज सेलिंग गुड्स टू विदिशा, विदिशा इज सेलिंग गुड्स टू प्रकाश, डजंट मैटर मैन, कौन किसको बेच रहा है, तेल लेने गया भाई, घर की बात है। लेकिन if the parent company sold 50,000 goods for 60,000 to subsidiary and the subsidiary is still having those goods, इन्वेंट्री इस हाथ से उस हाथ में है, हाथ तो दोनों मेरा ही है ना, बॉडी मेरा ही है। मेरा एक पॉकेट से सामान दूसरे पॉकेट में, पॉकेट मतलब दोनों पॉकेट मेरा ही है। पेरेंट सब्सिडी फॉर ग्रुप अलग नहीं है, सामान आपका आप ही के घर में है, मेरी वाइफ के पास है या मेरे पास है, क्या फर्क पड़ता है? सराफ फैमिली के पास सामान है, बाहर नहीं गया अभी, कोई फायदा नहीं हुआ। दुनिया को बेचने से फायदा होगा, घर पे ट्रांजैक्शन करने से कोई फायदा नहीं होएगा। इसीलिए मैंने बोला था 20 मिनट्स लगेगा, क्योंकि रोहित जी ऐसा बात बोल दिया, दिल को चोट लग गया, तो उसके कारण 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया कि कोई ना कोई तो ऐसा चालू होएगा ही ना, जो सिंपल बात को भी कम्बरसम बनाएगा और फिर माथा खराब करेगा। नॉट मेरा, अपना खुद का, कि सिंपल बातों को सिंपल नहीं समझते हैं। अगर पेरेंट ने 50,000 का गुड्स सब्सिडियरी को 60,000 में बेचा, या किसी ने भी किसी को बेचा, पेरेंट सोल्ड टू सब्सिडियरी, सब्सिडियरी इज स्टिल हैविंग, नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, सब्सिडियरी सोल्ड टू पेरेंट, पेरेंट इज स्टिल हैविंग, नॉट सोल्ड टू थर्ड पार्टी। तो वो जो 10,000 प्रॉफिट हुआ, वो हुआ नहीं है, वो तब होगा जब मार्केट में बिकेगा। हम लोग अभी बात किए, ये सारा कहानी चालू करने के पहले, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर फॉर द ग्रुप, फॉर द ग्रुप द कॉस्ट इज 50,000 नॉट 60,000। Prakash is giving to Vidisha for 60, but for Saraf family the cost of that goods is 50 not 60। for Vidisha the cost is 60, I can say मैंने 50 का 60 में बेचा, 50 का 60, for her it is 60,000, but for Saraf family it is 50,000 only।
Similarly, for parent and subsidiary, the cost is 50,000, not 60. We cannot record inventory at sale price. Only when the sale price is lower than the cost, then okay. But when the sale price is greater than cost, we can't. When we sell, then we will record income. तो हम लोग को ये जो 10,000 इनकम इन्होंने लिख दिया, हटा दो. This is the profit which is not realized. Not realized means for the group. For family, it is not. Maybe for Prakash, it is realized. But for Saraf family, there is no income. हम लोग को क्या करना है? What we discussed in the last class, when we prepare balance sheet, parent inventory, subsidiary inventory will be total inventory. Parent assets, subsidiary assets will be the total assets. That is group accounting. So parent inventory, subsidiary inventory will be total inventory. But in the inventory, there is an inventory which valued 60,000. But for the group, the cost is 50,000, not 60. Whether parent sold to subsidiary, subsidiary sold to parent, doesn't matter. दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन में. मैं विदिशा को बेचूं, विदिशा मेरे को दे, क्या फर्क पड़ता है भाई? घर में ही है. 10,000 प्रॉफिट को हटाना है, इन्वेंट्री से गिराना है. इन्वेंट्री से आप 10,000 माइनस करोगे फॉर बैलेंस शीट, इन्वेंट्री टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, और प्रॉफिट से 10,000 माइनस करोगे. प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया था? प्रकाश ने विदिशा को बेचा, प्रकाश ने रिकॉर्ड किया. प्रकाश प्रॉफिट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10,000. विदिशा ने प्रकाश को बेचा, विदिशा प्रॉफिट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10,000. पेरेंट ने सब्सिडियरी को बेचा, पेरेंट प्रॉफिट शुड रिड्यूस बाय 10,000. सब्सिडियरी ने पेरेंट को बेचा, सब्सिडियरी प्रॉफिट शुड रिड्यूस बाय 10,000. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ध्यान देना जरूरी. When we discussed in the last class, we will be doing 5 workings. First, group structure. Second, net assets. Third, goodwill. Fourth, NCI. And fifth, दोनों कंपनी का मिला के retained earning. The subsidiary profit, share capital and all that we are writing where? We are writing in working note to net assets, share capital, retained earning and all that. So if the subsidiary company sold goods to parent, the subsidiary profit 10,000 need to be reduced in working note 2, because there we are writing retained earnings of subsidiary. But if the parent company sold goods to subsidiary, then the parent company income we are writing in working note 5, consolidated retained earnings. The parent company retained earning, that need to be reduced by 10,000. आप कहीं से भी less करेंगे, balance sheet will tally. Because ultimately both the profit will be combined. So whether you are writing it off from working note 2 or you are writing it off from working note 5, doesn't matter. Balance sheet will tally. You can dance by standing on chair, but marks will be deducted. Because you are not reducing the income of the organization who has recorded the income. It will affect the goodwill figure. It will affect the consolidated. बहुत सारा नंबर कट जाएगा. आपका बैलेंस शीट मिल जाएगा, आप डांस कर लेना एग्जाम में, बैलेंस शीट टैलीड, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप गलत कर रहे हैं. एनीथिंग डिडक्टेड फ्रॉम एसेट साइड नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी साइड. बैलेंस शीट विल टैली, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन डिडक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द आइटम ऑफ द लाइबिलिटी साइड. जहां है वहीं से लेस करना होगा. आप लीजिंग के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी है, गलत फिगर दिखाओ, एक क्या फर्क पड़ता है? बैलेंस शीट विल टैली. But if you are not writing non-current, correct figure, marks will be deducted, man. अगर आदमी गलत भी लिखेगा तो भी फेल नहीं होएगा. You are adjusting unrealized profit from any of the profit. You can't fail the exam. Failure will arise. You are not filling the paper. You are not solving the entire 100 marks paper. That is the reason for failure. Not that you are doing some wrong, you will fail. Neither FR, neither IFRS, nobody will fail in the exam for doing this error. But why I will do? Why I will do this error when I am not understanding, when I am not applying my brain? The profit need to be reduced from the profit where it is included. If the parent company sold the goods, parent company profit need to reduce working note 5. If the subsidiary company sold the goods to parent, subsidiary profit need to reduce working note 2. बोलेगा 2 और 5 याद रखना है, याद नहीं रखना है. But as I said, when you practice 3-4 problems, you will have the habit. 1,
group structure. 2 net assets of subsidiary, 3 goodwill, 4 NCI, 5 retained earnings. आपको ऐसे ध्यान रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा. जब लास्ट क्लास हुई थी तो मैंने यही बोला था, बस खाली फॉर्मेट लिखेंगे. लाइक आई सेड इन द फर्स्ट क्लास, जस्ट राइट द फॉर्मेट ऑफ पीएल बैलेंस शीट. आई सेड इन द लास्ट क्लास, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, गो रीड द नोट्स एंड जस्ट राइट द फॉर्मेट्स. इतना अगर करके आए, थोड़ा फीलिंग ज्यादा आ रहा है. नहीं करके आए तो भी लास्ट तक मैं फीलिंग जोर तक ला दूंगा. नहीं भी पढ़ के आए तो भी, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा. आई कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यू डोंट स्टडी. इतना चीज को यहां बक लिखा हुआ है, जो भी लिखने दीजिए यार. इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. When the parent and subsidiary are selling goods to each other, definitely they are selling goods at cost plus some markup at sale price. When the goods are still there with the other company, then the profit is not realized. That profit is not realized by the group. Maybe by parent it is realized, maybe by some, but for the group it is not realized. So we need to cancel that profit as IS2. Inventory need to be valued at cost or NRV, whichever is lower. For the group, cost of the inventory is 50,000, not 60,000. Prakash is selling to Vidisha. For family, the cost is 50,000. Maybe for Vidisha, it is 60. For family, when we are talking, we are not talking about Prakash, Vidisha, Vivan and all that. We are talking group. Parent and subsidiary, no individuality. Group. In the group, the cost is 50, not 60. So reduce the inventory value by 10,000. Reduce the profit in the liability side by 10,000. The profit need to be reduced. Who recorded the profit? Whether parent or subsidiary. It will be written in the question, eliminate. The problem happens that students understand this, but they are not able to calculate the profit part properly. Because the question will not be giving you 50,000 cost price, 60,000 sale price, 10,000 profit. The question will be giving you profit percentage. Le jhamela. I have seen 80% student not able to calculate when the percentage is given the profit amount correctly, even though you are doing wrong calculation. In place of 10,000, you are calculating 12,000. Chalo bhaiya. Then also balance sheet will tally. In asset side from inventory, you are reducing 12. In liability side from profit 12. Balance sheet to milega hi. Wrong hai. Marks katega. How the profit percentage need to be applied? Please focus. Please focus, Rohit ji and everybody. Please focus. Very simple. Don't go beyond whatever I'm saying. उसमें रहिए, उसी के अंदर. बहुत सिंपल है. अब हर क्वेश्चन में फिगर्स अलग आएगा. Very common type of adjustment comes in every problem generally. फ्री का नंबर कट जाएगा, फ्री का. The profit percentage may be on cost, may be on sale. 10% on cost, 10% on sale. 10% on cost is called 10% markup. They don't say cost. They say markup. याद रखिए भाई, 10% markup means 10% on cost. 10% on sale means 10% margin. Margin means on sale. In my example, 50,000 is cost price, 60,000 is sale price. So if it is percentage on cost, you will apply on 50,000. If it is percentage on sale margin, you apply in 60,000. What's the problem? You can say 50,000 into 10% in case of markup. You can say 60,000 into 10% in case of margin. But problem kahan hai? They are saying 10% margin, but in the question they are giving you figure 50,000 cost price. They are giving you cost of goods transferred by parent to subsidiary 50,000, but they are giving you 10% margin. Now student will do 10% of 50,000, 5,000 profit element. Moti chur ka laddu kahan nahi gaya? Because 10% markup each, 10% margin is on sale and 50,000 is cost price. अब क्या करें? When 10% margin on sale, sale price 100, profit 10, cost 90. Sale 100, profit 10, cost 90. So when cost is 90, profit is 10. When cost is 50,000, what is the profit element? 50,000 into 10 by 90. अब इसको याद वगैरह मत करना सर. परसेंटेज जिस पे लगाना है वो चीज अगर मालूम है लगा दीजिए.
percentage need to be applied on certain figure. If you know that, apply that. But if you don't know, assume 100. If they are saying 10% markup, 10% on cost, 50,000 cost, apply 10% of 50,000. But if they are saying 10% margin, they are giving 50,000 cost. You can't apply 50,000 10%. Assume करिए sale 100, margin on sale 100, profit 10, cost 90. Now apply unitary method. 90 is the cost, profit is 10. 50,000 is the cost. What is the profit? 10 by 90 into 50,000. Suppose they have given 10% markup, but they are giving 60,000 sale price. 10% markup, they are giving 60,000 sale price. You can't apply 60,000 into 10%, man, because markup means on cost and 60,000 is sale price. How can you do 10% of 60,000? Not allowed. Again, assume 100. Cost price 100. Profit 10%, 10. So sale price 110. In 110, 10 is the profit. So in 60,000, what is the profit? In 110, 10 is the profit. So in 60,000, what is the profit? The percentage which is given on what? If that figure is given, apply. If that figure is not given, follow unitary method. Assume cost price or sale price 100, calculate the profit, and then apply unitary method to calculate the unrealized profit. In every question, they will be giving you percentage. Some question on cost, some question on sale, some question cost is given on sale unit, some question sale is given on cost. डांस करेंगे आपके साथ अच्छे से. आप हर क्वेश्चन में डांस करते जाएंगे. आप मेरे से पूछते जाएंगे. मेरे को यहां चोट लगेगी कि एक बात को ध्यान से एक बार में समझना ही नहीं है और फिर हर क्वेश्चन में खुल खुलकर माथा खराब करते रहना है. यू गो ऑन सॉल्विंग 5,000 प्रॉब्लम्स, देन ऑल्सो इट विल बी लेस. टू थिंग्स. Profit adjustment. Why? How? If you understand why, you don't need to remember how. If you understand why the unrealized profit element need to eliminate it, because inventory at cost. For the group, the cost is 50, not 60. Eliminate 10,000. From where? From inventory, from profit. Profit, whether parent, subsidiary, whoever sold out. And then the calculation. They will not give 50, 60, man. They will give percentage and dancing with you. Apply the percentage properly, calculate the profit, adjust in both the sides, get the answer. This is one part. Unrealized profit adjustment for inventory. Anybody has any question for the time being? अब ये डरना मत, मैंने रोहित जी को बहुत सुना दिया, सॉरी, बट जो नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, फिर से फिर बोलेंगे. नहीं सर, मेरे को लगा उन्होंने पहले बोला ना नहीं प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो मेरे को लगा आप ऐसी जनरली पूछ रहे थे. मैंने 10,000 क्यों बोल लगता है ऐसा? आप यहाँ क्यों नहीं रहते यार? मैं इतना तो शांति से बोलता हूँ यार. प्रकाश, विदिशा, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो चुन चुन के पैदा करना पड़ेगा यार. इतना सिंपल था. उसके लिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉफिट, तो आप उन्होंने सीधा बोला कि टेक्निकल मत बोलो, तो मेरे को लगा ऐसी जनरली प्रॉफिट पूछ रहे थे. वो संबंध चालू हो गया, ग्रुप अकाउंटिंग लेस करो. अरे कहां से ग्रुप अकाउंटिंग यार? ये सब पहले कॉमन बात, सिंपल बात तो समझे, फिर ग्रुप अकाउंटिंग. यस मिस्टर उमर. So ये जरा प्रॉफिट, ये जो मार्जिन और ये मार्कअप वाले आप जरा एक्सप्लेन करते हैं दोबारा प्लीज. मेरे को वापस एक्सप्लेन करने से लगता है आपको कम ही समझ में आएगा. आप बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सोच रहे हैं आप, वो बोलिए. बिलीव करिए ज्यादा समझ में आएगा. मैं तो वही बात फिर रिपीट कर दूंगा. जी नहीं, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आया कि जो अगर फॉर एग्जांपल आपको 10% मार्जिन दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? आप बोलिए क्या करना है. सर आपने बताया कि हमने पे प्राइस जो है वो एज्यूम करेंगे 100 और उस पे 10% कैलकुलेट करेंगे. ये जो आप बोले यही गड़बड़ बोल दी है सर. अच्छा, पहले आप ये बोलिए कि 10% मार्जिन मतलब 10% ऑन सेल प्राइस. हाँ जी. मार्जिन मीन्स ऑन सेल, मार्कअप मीन्स ऑन कॉस्ट. नहीं मैंने क्या सेल प्राइस 100 एज्यूम करेंगे फिर. नहीं तो क्यों एज्यूम करेंगे? ये नहीं समझ रहे, इसीलिए तो नहीं हो रहा है ना. हमको 10% ऑन सेल प्राइस लगाना है. आप बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप परसेंटेज लगाओगे कैसे सर?
आपको बोला जा रहा है 10% ऑन सेल प्राइस, और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 10,000, 20,000, 30,000 दिया है। तो आपको तो ये नहीं बोला गया ना 10% ऑन कॉस्ट, आपको तो ऑन सेल बोला है। तो आप क्वेश्चन का फिगर पे 10% तो लगा नहीं सकते। अब आप क्या करोगे, आप बताओ, बोलिए क्या करोगे? जी जी। तो अब हम लोग को करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप x सोचिए या आप 100 सोचिए। x मतलब एल्जेब्रा, 100 मतलब मैथमेटिक्स। यहां पर 100 सोचना उचित है, एक्स फैक्स लेने से टाइम बर्बाद होएगा। आपको लगाना है 10% ऑन सेल प्राइस। आप एज्यूम कर लीजिए सेल प्राइस $100 है, तो $100 का 10% $10 इनकम। तो सेल में से इनकम लेस करेंगे, कॉस्ट आएगा 90। अब आप यूनिटरी मेथड बनाइए कि अगर $90 कॉस्ट है तो प्रॉफिट है $10। तो आपको क्वेश्चन में कॉस्ट 50,000 दिया है, तो प्रॉफिट कितना होगा? $90 इफ कॉस्ट इज देयर, प्रॉफिट इज $10। सो अगर 50,000 इज द कॉस्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट एलिमेंट? 50,000 इंटू 10/90। ठीक है, थैंक यू। इसके ऊपर परसेंटेज लगाना है। ए भाई कैलकुलेशन नहीं यार, ऐसे ही हम हाइपोथेटिकल फिगर ले रहे हैं। सोमन दास प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज आप जो मेल भेजा है ना, हमको दिल पे बहुत चोट लग गया सर, छलनी हो गया दिल। आपका बहुत डांस करने वाले डंडा आपका, क्या क्या बात आप करते हैं सर, बताएगा अभी। मेरा ये बोलने का मतलब है, आपको इतना सोचना है कि परसेंटेज जिस पे अप्लाई करना है वो फिगर क्वेश्चन में है क्या। अगर है तो लगाइए ना सर, फिगर निकालिए ना। बट इफ परसेंटेज जिस पे अप्लाई करना है वो नहीं है, तो आपको 100 के थ्रू जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन गलत होगा। बैलेंस शीट फिर भी मिल जाएगा, डबल एडजस्टमेंट तो गलत फिगर से हो रहा है ना। आप डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत अमाउंट कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बैलेंस शीट लेकिन रॉन्ग रॉन्ग है। इन्वेंट्री फिगर रॉन्ग, प्रॉफिट फिगर रॉन्ग, मे बी सब्सिडी ने बेचा है तो सब्सिडी का प्रॉफिट रॉन्ग, वर्किंग नोट 2 रॉन्ग, गुडविल रॉन्ग। कितना रॉन्ग हो गया सोचिए, एक छोटा सा एडजस्टमेंट के कारण 4 तो फिगर रॉन्ग हो गया। सबका नंबर तो कटेगा ना सर, क्या किया जाए? अगर नहीं चाहिए ऐसा हो तो ध्यान रखिए भाई कि ये कैलकुलेशन ऐसे करना है। बोलिए हिमांशु जी। सर अगर किसी रीजन से कॉस्ट से बिलो प्राइस पे सेल करते हैं तब भी IS2 ही अप्लाई करेंगे, कॉस्ट और NRV? नहीं समझा, हम फिर से बोलिए एक बार, शुरू में क्या बोले, थोड़ा सा सर निकल। जैसे किसी रीजन से इन्वेंट्री लोअर देन कॉस्ट से सेल हो गई, तब भी नॉर्मल IS2 जैसे कॉस्ट या NRV ही अप्लाई करके चलेंगे? ऐसा क्यों होगा, पहले आप क्या सोच रहे हैं मन में? मे बी आर्म लेंथ प्राइस की वजह से हो सकता है, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस कॉस्ट से बिलो पे सेल करना पड़ा हो, मतलब दोनों एंटिटी तो इंडिपेंडेंट है और फेयर प्राइस के बेसिस पे वैल्यू कम आ रही हो नहीं, तो पहले हम मार्केट में। ग्रुप अकाउंटिंग के बजाय नॉर्मल अकाउंटिंग ही समझते हैं। हम लोग नॉर्मली जब अभी पढ़ना चालू किए तो मैंने पहले यही बताया था कि कॉस्ट और एनआरवी लोअर क्यों होता है। तो जब हम लोग घर वाले को बेच रहे हैं और अगर मार्केट प्राइस लोअर है तो घर वाले को लोअर दाम पे ही बेचेंगे ना, बेसी दाम पे क्यों हम्म बेचेंगे? तो इन दैट हम्म केस जो घर वाला है उसके पास सामान 50,000 का 40 में गया है और आपने यस 10,000 लॉस लिख दिया और आपने इन्वेंट्री को 40 यस बना दिया। आपको ग्रुप अकाउंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज आप ही बोल रहे हैं हम्म दोनों का लोअर, और आप लोअर ही तो बुक्स में रिकॉर्ड हम्म कर रहे हैं, लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है सर। ओके प्रॉफिट होने से आपको कॉस्ट पे लाने के लिए हटाना पड़ेगा, लेकिन लॉस होने ओके। से तो आपको लॉस रिकॉर्ड ही करना था, रिकॉर्ड भी कर दिए, खत्म। करना क्या है? तो वो ऑलरेडी लोअर पे मेंशन्ड है तो फिर अच्छा एडजस्टमेंट ही करने है। की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा यस कोई क्वेश्चन यस एग्जाम में तो नहीं आएगा, बिकॉज फिर आपको कुछ करना नहीं है, आपको आएगा प्रॉफिट वाला ही। बट अगर बाई चांस ओके प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो गया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग सर। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इज ऑलरेडी डन बाई डूइंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन देम। ओके बिकॉज यहां तो उसी लिए हटा रहे हैं ना कि प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है, इन्वेंट्री का वैल्यू 50 है 60 नहीं है। जब 50 का 40 हो गया तो हम्म 40 लिखना है ना, लॉस लिखना भी है, लिख दिए, हो गया, खत्म। बेस्ट सर, नथिंग टू बी डन। बात यहां पर यह है, स्टूडेंट लोग मैंने देखा है 80% प्लस, सर ये फिगर कहां से आया, सर ये कैसे लाया, सर फिर से बोल दीजिए, लाइक ओमर सेड। एक बार दिमाग पे जोर लगा के प्रॉपरली समझ लीजिए,
फिर एक दो क्वेश्चन करने के टाइम पे ठीक से सॉल्व करिए, गलत होगा फिर भी ध्यान दीजिए, बाद में जीवन भर कुछ करना ही नहीं। बट अगर ठीक से नहीं समझेंगे आप, कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, कितना भी, वो एग्जाम में जाके फिर रॉन्ग हो जाएगा। ओमर, यू अंडरस्टैंड दिस? Anybody, if not getting the concept you will not be getting by doing 50 problems. You will get the concept by doing 1 or 2 problems only. So whenever we do problems in the beginning, should be done very slowly, not thinking about time and all that. When your understanding is there, speed will automatically come. But first of all, understand the concepts properly. यहां पर नीचे पीयूपी एग्जाम्पल फिगर्स दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ने के लिए आपके पास है 5 मिनट और। ये कंप्यूटर मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है, ये मेरा एसेट है, नॉन करेंट एसेट। दिस कंप्यूटर आई एम सेलिंग टू माई वाइफ विदिशा। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट इन्वेंट्री फॉर सराफ। फॉर प्रकाश दिस इज अ नॉन करेंट एसेट्स कंप्यूटर, and I am selling this computer to my wife. I purchased this computer for 1 lakh. Depreciation already done 30,000. The carrying value for Prakash 70,000. Sold to Vidisha for 80,000. For Vidisha also it is an asset. It is not inventory for her. She will also be using computer for doing her business. Whether it's an inventory, whether it's a computer, for the Saraf family, the cost is 70,000, not 80,000. Whether while selling inventory we have recorded 10,000 income, whether while selling assets we recorded 10,000 income, udao. For the group, the cost of computer is 70, not 80. For Vidisha it is 80, but for family it is 70. यानी कि कंप्यूटर से 10,000 हटाना है और प्रॉफिट से 10,000 हटाना है। लाइक इन्वेंट्री से और प्रॉफिट से सेम स्टोरी, नो डिफरेंस। प्रॉफिट कौन सा? हु हैज रिकॉर्डेड द प्रॉफिट, जिसने सेल किया। लेकिन एक एक्स्ट्रा कहानी है। नाउ विदिशा इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ऑन 80,000 बिकॉज कॉस्ट फॉर हर 80,000, बट फॉर द ग्रुप the cost is 70,000. So Vidisha has recorded depreciation on 80,000, whereas for the group depreciation should be on 70,000. Vidisha recorded depreciation say 8,000, 10%, but depreciation for the group should be 7,000, 1,000 depreciation extra. Vidisha has done correct, but for the group it is wrong. For the group the cost of the asset is 70, not 80. So depreciation considered 8,000 should be considered 7,000. The assets value in the books after deducting 8,000, but it should be after deducting 7,000. So the asset value need to be increased by 1,000. For 10,000 profit element, asset value need to reduce. For 1,000 depreciation, asset value need to increase. 10,000 depreciation, the profit need to be reduced. For 1,000 depreciation, the profit need to increase. Because in the profit, depreciation should have been considered 7,000, but we have considered 8,000. So the profit need to increase by 1,000. Focus. Prakash sold it to Vidisha. Prakash profit should be reduced by 10,000. Vidisha recorded depreciation 8,000. But depreciation should be 7,000. Vidisha profit need to be reduced by 1,000. Sorry, need to be increased by 1,000. My profit, I sold it to Vidisha, should be reduced by 10,000. Vidisha recorded depreciation 8, should be 7. So Vidisha profit need to be increased by 1,000. Parent subsidiary. Parent sold 70,000 value of assets for 80,000 to subsidiary. Parent profit will reduce by 10,000. Subsidiary profit will increase by 1,000. Parent profit working note 5. Subsidiary profit working note 2. If the subsidiary sold goods to parent, subsidiary profit need to be reduced by 10,000. Working note 2. Parent profit need to be increased by 1,000. Working note 5. The 10 and 1 will be adjusted in assets value. Parent assets, subsidiary asset, total assets, total assets, total assets, minus 10,000. That is not an asset value because for the group 10,000 there is no asset value, plus 1,000 the depreciation considered extra need to be cancelled out. For inventory there is no chakkar of depreciation because inventory is not a depreciable asset. But for non-current assets,
Along with unrealized profit, it is depreciation also getting affected. So if this type of thing comes for non-current asset, double adjustment. Unrealized profit and depreciation. If this is coming for inventory, single adjustment, just unrealized profit elimination. The depreciation information will be given in the question. What is the depreciation rate and all that you need to accordingly calculate. When you solve problem, if at least you can do this much in exam, you just add up both the balance sheet. You ignore the subsidiary company share capital reserves. You ignore the parent company investment in the subsidiary. You write the goodwill in the asset side, you write in the liability side and NCI. Maybe the figures are wrong. Out of 25 marks, you will get 10 marks. बोलेगा झूठ बोल रहे हैं सर, मैं आपको दिखा दूंगा मार्किंग गाइडलाइंस. यानी कि 10 नंबर कैसे आ रहा है एग्जाम में? जोड़ने से. अगर एग्जाम का फेल पास का टेंशन हो रहा है, पहले उसको तो दूर करें. 25 मार्क्स में 10 मार्क्स एडिशन करने से आ रहा है. थोड़ा सा भी एक्यूरेसी लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट को सही कर देंगे तो 15 नंबर तो ऐसे ही पहुंच जाएगा. चैलेंज इज टू स्कोर 25 आउट ऑफ 25. Challenge is not to score 10-15 marks. So if in the entire paper you are able to do 50% correct every problem, you are getting 50, man. And to do 50% correct is not very sound knowledge required. Basic understanding will help you to score 50% marks. And you need to solve the entire paper. You can't leave the paper in the exam. Not a single marks paper. पूरा 100 नंबर का करके आना होगा. These things are written here. I'm not reading the example of inventory, not reading the example of non-current assets. Figures are given, blah, blah, blah. And then there is a question which is fully solved. I said in the last class, you read that question and all that. Maybe not done, you read after the class, no issue. Yes, Rohit ji, बोलिए sir. सर जैसे आपने इन्वेंट्री के लिए बोला, अभी मैं सपोज अज्यूम कर रहा इन्वेंट्री की वैल्यू है 5000. अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया है 10% मार्जिन पे उसको ऐड करना है, तो मैं 5000 का 10% निकालूंगा, मतलब 500 और उसको ऐड कर दूंगा. आपको क्या दिया है? 5000 दिया क्या है? कुछ तो बोलेगा ना क्वेश्चन में. कॉस्ट दिया है, इन्वेंट्री का कॉस्ट है ये. हाँ ठीक है. और एडजस्टमेंट में नीचे मार्जिन दिया हुआ है कि 10% मार्जिन पे कैलकुलेट करना है, तो मैं उसका 5000 का 10% निकाल के 500 ऐड कर दूंगा. 5000 लड्डू आप बोल रहे हैं कॉस्ट और 10% मार्जिन तो ऑन सेल होता है. हाँ तो सर एक मिनट सुनिए तो सही, मतलब मैं ऐड कर दूंगा 5000 और 500, फिर उसके ऊपर निकाल लूंगा 10% जो मार्जिन करेगा. ये गलत हो गया ना ऑलरेडी. तो 500 तो 10% 5000 का निकाल दिए, परसेंटेज ऑन सेल लगाना है. ऑन कॉस्ट लगा के क्या निकाल रहे हो? नहीं मतलब मैं सर सोच रहा हूँ कि उसका पहले 10% निकाल के सेलिंग वैल्यू निकालो ना. 10% ऑन सेल लगाना है, आप कॉस्ट पे क्यों लगा रहे हो? मैं सोच रहा था कि उसका वो फिर उसका सेलिंग प्राइस नहीं. अच्छा हाँ ओके सर, सेलिंग प्राइस नहीं दी. ठीक है सर. मुझे लगा सर जैसे आप लोग मार्जिन निकालते हैं ना. समझ में आ गया कि गड़बड़ क्या हो रहा था? बात समझ गए? नहीं आगे नहीं बोलो. हाँ ठीक है, हो गया, समझ गया. बस गलत बात बोलकर दूसरा को भी कंफ्यूज करते हो यार. ओके सर. जो उमर जी बोला वो आप घुमा के फिर आ गया सर. बात तो एक ही है सर. क्या बात करते हो सर? मन से खुशी से पढ़ो तब अच्छा लगेगा. दुखी होकर टेंशन लेकर एग्जाम में फेल होएंगे, खाली यही सोचेंगे तो साला कुछ नहीं समझ में आएगा. फेल पास से जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है. एग्जाम में फेल होकर भी पास होकर भी कुछ नहीं. फायदा जिंदगी में तभी मिलने वाला है जब चीज आती है, जब उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कर सकते हैं, तभी दुनिया में कोई बुलाने वाला है. आपका नंबर देखकर कोई आपको नहीं चाटने वाला है. मे बी समबडी इज स्कोरिंग 70 मार्क्स लेकिन आता कुछ नहीं है, बोलेगा कैसे पास हो गया? सर knowing practical knowledge and giving exam, passing exam are two different things. दोनों में रिलेशनशिप अलग है सर. तो इसीलिए समझने पे चेष्टा करिए, एग्जाम अपने आप पास हो जाएगा. अब आगे चलते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 घंटा लगने वाला है. बहुत हौले हौले आस्ते आस्ते. आप पहले ही चालू मत जो जाना सर ये क्या होगा वो. अरे भाई 3 घंटा मैं ऐसी थोड़ी ना लगा रहा हूं. मेरे को अगर सॉल्व करना, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 20 to 25 minutes. आई एम गिविंग 3 hours फॉर ऑल ऑफ यू.
टू रिवाइज एवरीथिंग वेरी स्लोली। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ एक दो चीज ऐसा हो जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। पढ़े मतलब चैप्टर कर लिए, मान लीजिए यही कुछ उसमें एक्स्ट्रा है जो मेरे को बाद में बोलना है, मैं बताऊंगा। आपको शांति बरतनी है, हौले हौले। जब मेरा पूरा खत्म हो जाएगा तब आपको क्या बोलना है तब बोलिएगा। तब सब लोग क्या बोलने वाले हैं, सर फिर से करना होगा, अभी कुछ नहीं पूछना है, मेरे को मालूम है सब यही बोलने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास आएंगे कुछ करे बगैर। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास जो सम अभी कराऊंगा चुपचाप सॉल्व करके आना है, अदरवाइज आना ही नहीं है, नहीं तो छोड़ देना है पढ़ाई। यू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम फुल्ली अगेन इन 3 आवर्स, देन ओनली यू विल बिकम अ परफेक्ट स्टूडेंट। अदरवाइज आप ऐसे ही डांस करते रहिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। जो हम बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। अगर वो मानने से काम नहीं बनेगा तो आप मेरे को आके जूता मारिएगा, खोल लीजिएगा जूता और मारिएगा, बट पहले वो मान तो सही भाई, ठीक है। इसीलिए चुप रही अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इसके बारे में कॉस्ट मार्जिन ये सब बोलना है तो। हम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, accaglobal.com। अब मोटा मोटी हर क्लास में हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। स्टूडेंट्स स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस, मैं गया स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस। यहां पर एक कॉलम रहता था IFRS, या है नहीं, मेरे को अब सर्च करना पड़ेगा। IFRS पास्ट पेपर्स, थोड़ा इधर उधर वेबसाइट पे चेंजेस किया गया है, नो प्रॉब्लम। IFRS पास्ट पेपर्स, डीप IFRS पास्ट एग्जाम्स, ठीक है। इसमें जा रहे हैं तो आपको मोटा मोटी 6-7 टर्म का क्वेश्चन पेपर आंसर दिया हुआ है। मैं इसमें से क्वेश्चन पेपर अभी जो जून 2024 वाला है वो खोल रहा हूं। बोलेगा सर ये IFRS है, FR वाला का क्या होएगा? ज्यादा नौटंकी नहीं। IFRS बोलेगा FR का, अरे यार दोनों का सिलेबस सेम है यार। हो सकता है थोड़ा सा IFRS के अंदर कोई एडजस्टमेंट ऐसा हो जो मान लीजिए ESOP हो, मान लीजिए इंप्लॉय बेनिफिट होगा तो देखा जाएगा, अदरवाइज तो सिलेबस कॉमन ही है। देखते हैं 99% सेम है। बस ये है कि FR के अंदर अगर पार्ट C में ग्रुप अकाउंटिंग आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और IFRS में तो मल्टीपल चॉइस है ही नहीं, सारा ही माने ऐसे टाइप है। हम ये पेपर खोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप अकाउंटिंग होता है, रूल है। बोलिए कैसे पता चला? पहला क्लास का रिकॉर्डिंग खोल के देख लीजिए, बताया गया है। अभी वापस से उसको नहीं बोला जा सकता भाई, ये सब फर्स्ट क्लास में खोल खोल के आपको दिखाया गया है इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे। ये जून का पेपर है, जैसे खुल रहा है वैसे ही एग्जाम में खुलेगा। वेदर यू गिव एग्जाम इन एग्जाम हॉल और यू गिव एग्जाम सिटिंग इन होम, द सेम प्रिंसिपल विल बी देयर मैन, ओके। मैं ये सब इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ रहा हूं, आपको एक बार पढ़ना चाहिए अगर जिंदगी में जीतना है तो। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप अकाउंटिंग होता है, उसमें खाली ये देखना है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिबिट्स, देन रिक्वायरमेंट, देन स्प्रेडशीट, एक्सेल सीट। रिक्वायरमेंट, मैंने रिक्वायरमेंट को खोला, क्यों खोल रहा हूं? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट। वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर सिलेबस 1.5 month बैक कि IFRS में हम लोग बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। दिस इज ग्रुप, तो उसको बोलते हैं ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट बनाने बोला, हम लोग अभी बैलेंस शीट पढ़े हैं, PL अकाउंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना है, अभी नहीं सिखाया मैंने। तो मैं ये चेक करना चाह रहा था कि इन जून वेदर बैलेंस शीट केम और PL नाउ। कोई चालू हो जाएगा सर अब दिसंबर में क्या आएगा, फालतू बात नहीं। दे कैन रिपीट अगेन बैलेंस शीट और दे कैन गिव PL, ये सब बात मत सोचिए, जो भी आएगा आना चाहिए। इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, ये आएगा और दूसरा आ गया फिर तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। डोंट प्रोजेक्ट, 4 questions are there, anything can come. You need to be ready for everything. You are studying only accounting subject for 3 months. Why you will be doing any choices, sir? Don't think. For the year ending December 2018, consolidated statement of financial position for the year ending December 2018.
नो रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुडविल कैसे क्यों कर रहे हैं, वो सब बक नहीं करना है। अनलेस स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इन द क्वेश्चन, डू नॉट नीड टू कंसीडर डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही सोचना है, जबरदस्ती नहीं सोचना है। यू शुड शो ऑल वर्किंग्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, सारा वर्किंग ट्रिपल जीरोस में दिखाएंगे, पूरा लड्डू नहीं लिखेंगे। दैट इज बेसिक इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट्स अ 25 मार्क्स क्वेश्चन। जब एग्जाम में जाएंगे, पहला एग्जिबिट खोलेंगे, पहला एग्जिबिट खोलकर थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेंगे। घर से एग्जाम देंगे तो भी, एग्जाम सेंटर से एग्जाम देंगे तो भी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया कॉपी, ठीक है। कॉपी करके यहां वाला आंसर सीट का स्प्रेडशीट में आ जाइए। लॉक्ड, क्या लॉक्ड यार, ठीक है। आंसर सीट में आ गए, अरे वाह, आंसर सीट में कॉपी करके पहले से ही दिया हुआ है। कितना अच्छा लोग है ये लोग। पहले का एग्जाम्स में कॉपी करके दिया नहीं रहता था तो हम लोग यहां पर पेस्ट करते थे, बट अभी करना नहीं पड़ रहा है मेरे को। बहुत भालो, खूब अच्छा, फैंटास्टिक। यहां पर लिख दीजिए एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा हौले हौले देखा जाएगा। और यहां लिख दीजिए फाइनल फिगर। फाइनल फिगर, एडजस्टमेंट लिखने के बाद फाइनल फिगर हमने लिख दिया। फिगर्स ऑलरेडी थाउजेंड्स में है, फिगर 5 लाख और 2,60,000 है। एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। मान लीजिए कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इक्वल टू दिस प्लस दिस इज दिस। मतलब कोई कैलकुलेटर का जरूरत नहीं। बोलेगा सर मेरे को एक्सेल नहीं आता, अरे यार इसको लेकर प्लस लिखकर इसको लेकर थोड़ा सा सीख लीजिए। I will share one video in which basic Excel functions I am explaining in 30-40 minutes. So those who have never worked on Excel, I have also not worked very fast. मेरा भी एक्सेल पे हाथ धीरे बट इजी है। और आपको अगर अच्छा लगता है कैलकुलेटर में 5 लाख 2,60,000 जोड़ दीजिए। Somebody will say that sir in the exam this was not working. अगर यह बोलेंगे मैं तो आज से जीवन में जितना भी अर्निंग्स किया हूं सारा पैसा आपको वापस दे दूंगा। If you give exam from home, if you give exam from exam center, ये जो मैंने किया है जरूर वर्क करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं करेगा। और आप एग्जाम सेंटर में बोल रहे नहीं कर रहे हैं तो इन्वेजिलेटर वहां नहीं है क्या, उसको बोल नहीं सकते देखो नहीं वर्क। सर प्रैक्टिकली हुआ था सर ये प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही नहीं लिखा आपको। सर आप पूरा झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप पगला गए थे एग्जाम में, बगैर प्रिपरेशन आपका माथा उता खराब हो गया था। ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, ये आज तक जीवन में 15 साल में एक स्टूडेंट नहीं बोला है, चाहे घर से एग्जाम दिया हो चाहे एग्जाम सेंटर से, कि प्लस करने से प्लस नहीं हो रहा था सर। आज तक कोई नहीं बोला। दिस इज फर्स्ट यू आर सर। अभी क्या मानो सर, बोलिए आप बोलिए हम क्या करें। सपोज यू आर प्रकाश सराफ, आई एम सोमेन। इफ आई विल say this to you, I should hear this from anybody any time in life? Never heard. ये जरूर हर किए कि सर कीबोर्ड से टाइप कर रहे थे आ रहा नहीं था, कीबोर्ड उनका अच्छा नहीं था। वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मालूम है। बिकॉज इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कीबोर्ड रेगुलरली यू बिकम हैबिचुएटेड। when you press the button you don't need to check whether it is pressed or not, but if it is a new keyboard some problem arises. तो ये हो सकता है आपका कीबोर्ड पे हाथ नहीं बैठा हुआ है, it was not smooth because that keyboard is new. That problem happen whenever you go in the exam center because the keyboard and the screen are new. And your keyboard and screen which you are using in home, they are like this is habituated. I don't need to see so much when I pressed the figures is coming or not. हर कीबोर्ड अलग अलग कंपनी का, कितना देर काम, वो कीबोर्ड का प्रॉब्लम था। That is not that the Excel was not working. And you were very tensed because you were not properly prepared. For that reason आप पगला गए थे एग्जाम में सर। बिलीव करिए, हम भी तो यार है यार, सच बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे सर। कोई तो दुनिया में बोलेगा आपके जैसे कि सर एक्सेल में प्लस नहीं हो रहा था। एक को जन नहीं बोला है आज तक सर, यू आर द ओनली वन। अभी क्या बोले, व्हाट शुड आई से।
If you will say, I will accept, I will not accept, sir. But what is the proof I can give you? How? There is nothing I can prove here, sir. कोई भी जन एग्जाम दिया है जो लोग ACCA का, IFRS तो नहीं. Anybody can say this happened with you, whether in the exam center or in home, that you are doing plus is not working in the Excel. Anybody? क्या भाई? सौरजब खान, तन्मय, सोहेल, सौरजब खान, तन्मय, सोहेल, बोलो यार, इनको हेल्प करो यार. ये बोल रहे हैं कि एक्सेल में प्लस नहीं हो रहा था. तुम लोग और दूसरा तो एग्जाम दिए हो. रोहित जी, आप तो एग्जाम दिए नहीं, आप बोल नहीं सकते, आप एलिजिबल नहीं है इस बात को बोलने के लिए सर. आदित्य नहीं बोल सकता क्योंकि वो एग्जाम नहीं दिया है. तन्मय, आर यू देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन? सौरजब खान? यस सर. हाँ सर. ये क्या बोल रहे हैं सर? आप FM का एग्जाम दिए हैं या PM का एग्जाम दिए हैं कि एक्सेल में प्लस करने से प्लस नहीं हो रहा था, ये बोल रहे हैं सर एग्जाम में. ऐसा संभव है क्या सर? सर हम तो खाली ऑडिट दिए, ऑडिट में एक्सेल था ही नहीं. इसीलिए तुम नहीं बोल सकते हो, वो बोल सकता है क्योंकि वो और भी एग्जाम दिया है. नहीं सर, प्लस माइनस होता है, सब ठीक है. सर ये इम्पॉसिबल है यार. एक्सेल है तो प्लस होएगा ही. वो क्या है कि वो उनका कीबोर्ड थोड़ा सा वैसा होएगा हार्ड, तो उनको लग रहा है प्रेस कर रहे हैं, प्लस नहीं ले रहा है. या हो सकता है कि वो पगला गए हैं, एग्जाम में पढ़ के ठीक से नहीं गए हैं, पहले से ही क्लीन बोल्ड है, तो उनको लग रहा है एक्सेल नहीं चल रहा है, कंप्यूटर खराब है, ये सब लग रहा है. ऐसा नहीं है सर, बिलीव करिए. आप जो बोल रहे हो उसका कोई सिर पूछ नहीं है सर. ये कंप्लेन मैंने रिसीव किया स्टूडेंट से, सर कीबोर्ड वाज वेरी बैड, व्हेन आई एम प्रेसिंग इट वाज नॉट कमिंग ऑन द स्क्रीन. स्टूडेंट हैज कंप्लेंट, बट नेवर दिस कंप्लेंट आई फेस्ड. दिस इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू सर. ACC इंस्टीट्यूट को बोलेंगे तो धरती के नीचे डूब जाएगा सर. ठीक है. देयर इज नो सॉल्यूशन आई हैव, बट दिस विल नॉट हैपन, बिलीव मी. तो आप अगर बोलेंगे फिर ऐसा हुआ तो इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है सर, ऐसा कभी होता ही नहीं है, तो फिर ऐसा हुआ उसका क्या जवाब दे सर? आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस सर. ठीक है सर, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं सर. क्या सोमेन दास? नहीं, इस बार अगर होगा तो मैं तो इन्विजिलेटर को पहले क्वेश्चन करूंगा कैसे हो रहा है. सर अगर होएगा ना तो थोड़ा सा मेरे को भी बुला लीजिएगा, और हम आज तक जितना पैसा कमाए हैं सब आपको वापस दे देंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं. बिकॉज आप कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो असंभव है. आप बोलेंगे हम एग्जाम में हम मिस्टर इंडिया बन गया, ऐसा तो नहीं होएगा ना सर. सर ये गलत बात है, बिलीव करिए. आप मानते क्यों नहीं है यार? इसका कोई सिर पूछ नहीं है इस बात का सर. समझिए, आपका केवल एक ही प्रॉब्लम है, आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं थे, आप पगला गए थे. तो जब आप एग्जाम में पहुंचा तो पगलाया हुआ तरह से आप एग्जाम दिए, समझिए आप. क्योंकि आई एम नॉट सेइंग व्हाट नंबर यू स्कोर, एनीबॉडी कैन स्कोर दैट नंबर विदाउट राइटिंग एनीथिंग सर. So you understand what you did. You have not solved the entire paper. You were not at all prepared. And this time also you are not properly prepared, sir, because you are not doing the questions in writing. So now we are again approaching to that last leg where we have not done the practice, how we will be able to manage. And like you, there are many. कि साला बोले जा रहा है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, खाली क्लास करने से थोड़ी ना होएगा. खुद से पढ़ाई करके सम सॉल्व करे बगैर कैसे पास होएंगे यार? ऐसे थोड़ी ना, इतना सिंपल थोड़ी ना है यार. ठीक है, जो भी है अभी फोकस करते हैं. पहले के एग्जाम्स में हम लोग को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था. अभी वो लोग क्वेश्चंस का बैलेंस शीट को कॉपी कर दिया, आपका वो टाइम भी बच गया. ठीक है, अभी आगे बढ़ने के लिए तो हमें एडजस्टमेंट्स रीड करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स ये सब आपको ऑन स्क्रीन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे काम करे बगैर, इसको बड़ा करना, इसको छोटा करना, ये सब खाली मेरे को देख के नहीं आएगा भाई.
If you don't practice on the institute website, FR student, IFRS student, in the exam your speed will be very slow. Normal Excel के बजाय you will be working on the Excel of the screen of the institute. तो वो एग्जाम का सॉफ्टवेयर थोड़ा फील आएगा. धीरे धीरे करके अब इस चीज को और फोकस करेंगे. अभी भी एग्जाम देने में 1 महीना से ज्यादा बाकी है, बहुत है. अभी तक 1.5 महीना ही पढ़े हैं, यानी कि 2/3 पढ़े हैं और 1/3 बाकी है, which is very quite significant. So don't take tension, but you need to work on the institute software, how you can broaden the screen, zoom in, zoom out, opening this file, that file. ये सब आपको सीखना पड़ेगा. आप पेन पेपर निकाल के सॉल्व करेंगे, एग्जाम में फेल होंगे, समझ लेना भाई. फर्स्ट क्लास से बोल रहे हैं. पेन पेपर किताब प्रिंट आउट निकाला, विंडो से निकाल के फेंक दो. आज फेंक दो एटलीस्ट. लास्ट बार बोल रहा हूं. If you want to pass, you have only one option: study on screen. Change yourself. Change is the only thing which is constant in the world. If you don't change, the whole world will destroy you. एग्जाम में पास होना है, चुपचाप कॉपी किताब सब फेंक दीजिए, यहां आ जाइए ऑन स्क्रीन सब कुछ पढ़ने के लिए. कोई भी प्रिंट आउट निकाल के रखा है सब फेंक दीजिए. इफ यू वांट टू पास. बोलेगा हम तो एग्जाम दे ही नहीं रहे. अरे भैया जब भी देंगे यार. International courses, computer based exam. Study should be computer based. No printout should be done. Even though allowed, no. On screen, read on screen, write on screen. Then your speed will come and you will be able to perform better in the exam. उन लोगों को ये बात दिल में बहुत लग रही होगी जो लोग अभी भी प्रिंट आउट निकाल के पेन पेपर से पढ़ रहे हैं. उनको ही बोला जा रहा है. जो बात को सुन रहे हैं उनको क्या बोले. और बहुत लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं. आपका स्पीड उसके लिए खराब हो जाता है. मत करिए ऐसा. बिकॉज एक टेंशन चीजों को ध्यान रखने का, दूसरा बड़ा कैसे करे, छोटा कैसे करे, किसको कहां खोलें. आप तो ऐसे ही खोजते रहेंगे. जो 10 सेकंड का चीज है वो अब 2 मिनट, जो 2 मिनट का चीज है 5 मिनट, तो सम कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिस में जाके काम करते हैं वैसे ही एग्जाम समझिए. ऑफिस वर्क है ये. ऑन 1 जनवरी 2016 हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. दिसंबर या मार्च. 1 सेकेंड. रिक्वायरमेंट क्या था भाई. 31 दिसंबर. और ये बात हो रहा है 1 जनवरी 2016, 3 years back. We are going to prepare financial statement on 31 December 2018. We are talking about 1 January 2016. एक एक डेट पे ध्यान देना है, नहीं तो बार बार गलती फलती करते रहेंगे. फोकस 500%, ओनली नॉट 100. मेरा तो 5000% है. एक बार एक चीज पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन के बाद बोल देना कहां क्या लिखा था. विद्या कसम हम भी पहले बार पढ़ रहे हैं. हम भी नहीं खोला है, हम आपके सामने ही खोले हैं. दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग. और वैसे भी जून में एग्जाम हुआ था, अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी खोलेंगे ना. मेरे को इतना जोश नहीं हम पहले खोल के बैठ जाए. आई एम ऑल्सो रीडिंग फर्स्ट टाइम, बट द फोकस इज वेरी हाई. दुनिया में कुछ भी हो रहा है, भूकंप हो रहा है, यूएसए में इलेक्शन कौन जीता हमको कोई मतलब नहीं है. अभी शेयर मार्केट से मतलब है, अभी नहीं है. अभी मेरा फोकस है बस क्वेश्चन का हर एक शब्द पे. एकदम मंत्र मुग्ध हो जाइए. बी कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड विच वी आर स्टडिंग. Everybody, please, for 3 hours, give to Prakash Saraf. On 1 January 2016, Alpha acquired 90 million shares in Beta and gained control of Beta. Can we say that Alpha is having 90% shares of Beta? Rohit ji, can we say Alpha has 90% shares of Beta? Rohit ji, can we say? Adit, can we say Alpha has 90% shares of Beta? Darshana, can we say Alpha has 90% shares of Beta? कोई बोलता नहीं है. साला कितना सिंपल बात पूछ रहा है फिर भी नहीं बोलता है. नहीं सर. Why we can't say sir? What is the reason sir? तो यहाँ पे खाली लिखा हुआ है 90 मिलियन शेयर्स. उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किए कि क्या कितने टोटल स्पेसिफाई शेयर्स करना हैं. है? क्या स्पेसिफाई करना है? कंट्रोल. नहीं तो परसेंटेज आपको कैसे पता चलेगा? टोटल शेयर्स. टोटल टोटल शेयर्स नहीं दिए हुए ना. टोटल शेयर कहां मिलेगा? Where you will get total share sir?
बैलेंस शीट। सर बैलेंस बीटा शीट की है शेयर यार, होल्डिंग क्या में। यार, शेयर कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटी कहाँ होता है? बैलेंस शीट में होता है। शेयर कैपिटल $1 शेयर, 2 लाख, 1,20,000, दिस इज इन ट्रिपल जीरोस। ट्रिपल जीरोस मतलब यू कैन सी 120 मिलियन, 120 मिलियन शेयर्स आर देयर, एंड 120 मिलियन में से पेरेंट ने 90 मिलियन शेयर एक्वायर किया। 120 मिलियन में से पेरेंट ने 90 मिलियन शेयर्स एक्वायर किया। कैसे आगे पीछे करना है ये आपको अपने आप ही करना होगा, मेरे करने से नहीं होएगा। आप सोचेंगे क्लास में सर कर रहे हैं ऐसे ही हो जाता है, अरे नहीं होता है भाई। स्क्रीन को एडजस्ट करके बार बार इसको खोलना, उसको खोलना, इसको बंद करना, ये भी एक कला है, ये अपने आप नहीं आएगा। यू नीड टू वर्क ऑन द स्क्रीन, ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, जस्ट बाय लुकिंग इन द क्लास यू कांट डू दैट मैन। और आप अगर ऑफिस में जाके काम करते हैं तो भी, बिकॉज ऑफिस में आप ऊपर खोल कर रखते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में खुल रहा है, अलग अलग क्लिक करना, खोलना, एक्सरसाइजिंग करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। कोई सिखाएगा नहीं, आके मेरे सामने देखने से कुछ नहीं होएगा, समझ लेना। सो हाउ मच परसेंटेज पेरेंट कंपनी इज हैविंग इन सब्सिडियरी? हाउ मच परसेंटेज? आदित्य जी कुछ बोलता नहीं है, आदित्य बेटा पढ़ता उड़ता कुछ है नहीं यार, बीच बीच में भाग जाते हो क्या यार? कैसे एग्जाम पास हो गया यार? ऐसे ही फ्री में लग रहा है क्या? If somebody is thinking that ACCA is easier than CA, you are wrong, man. It is not easier. तन्मय जी आपका जो दोस्त लोग है वो लोग तो ये सब चीज पढ़ेगा CA फाइनल में, इंटर में तो है ही नहीं। एंड यू आर स्टडिंग एट इंटरमीडिएट लेवल द फाइनल थिंग ऑफ CA। तो डिफिकल्ट किसका सिलेबस हुआ, आपका कि उसका? क्या तन्मय जी? हाँ हम लोग का। हाँ समझ लो सर, ये सब ऐसे ही कहानीबाजी है दुनिया में। बस एक ही फायदा है, केवल अकाउंट्स। उसको अकाउंट्स भी पढ़ना है, ऑडिट भी पढ़ना है, लॉ भी पढ़ना है, टैक्स भी पढ़ना है, एक साथ मर जाओ सारा पढ़ के। हम लोग के लिए ये सुविधा है, ओनली अकाउंट्स 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 अकाउंट्स। उसी को हम खराब करते हैं। आज भी एक CA फोन किया, बोलता कैन आई गिव ऑल द 4 एग्जाम्स इन मार्च? हम बोला दे बेटा, पता चलेगा, नानी नहीं याद आ जाए तो। ऐसे नहीं बोला, समझाया उसको कि भाई डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट टेक लूजली, इट इज नॉट दैट सिंपल सर। एक पेपर एक बार में दीजिए, अच्छा है। कहाँ है चिराग जी? नहीं है, हम आना बंद कर दिया। वो बोला था इस बार 2 एग्जाम बुक किए हैं, वही वो अभी पहले आया 10-15 दिन फिर गायब, अब दोनों बर्बाद है। प्लीज साला मालूम नहीं है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग? आदित्य जी, तन्मय जी, कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है? बोल बोल कर 75। डिस्कस है। 75। 75%, 90 by 75%. 25%. So NCI each 25%. In parent and subsidiary relationship, 75% parent, 25% NCI. From which date? From 1st January 2016. Where we are standing on December 2018, 3 years later. We will be calculating goodwill 3 years earlier when the shares were acquired. On 1st January 16, we will be calculating goodwill. How? We will revise everything. Don't take tension. आपको अगर वर्किंग नोट 1 ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, मत बनाइए, बट इतना कॉन्सेंट्रेट करके यहां तक पहुंच जाइए कि वर्किंग नोट 1 में आप लिखोगे क्या? ग्रुप स्ट्रक्चर, पेरेंट 75%, NCI 25%, सिंस 3 इयर्स। आप यहां कॉन्सेंट्रेट करिए ना, मत करिए वर्किंग नोट 1। बट अगर आप भूल जाते हैं तो वर्किंग नोट 1 करिए। रोहित जी कुछ प्रॉब्लम अभी तक? रोहित जी क्लास खत्म होने के बाद 3 घंटा में ये सब ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बनवा रहा हूं। और अगर कोई चैंपियन है उसको भी बनाना होगा। चैंपियन को 25 में 25 लाना है, नॉर्मल आदमी को 25 में 15 लाना है। अरे भैया पास तो सबको होना है ना, दोनों के लिए सेम आंसर है। चैंपियन चैंपियन बनेगा जब ये करेगा फिर से, फिर दूसरा क्वेश्चन सोचना, पहले इसको करना, ठीक है। Alpha made a cash payment of 207.9 million to acquire these shares. Alpha incurred legal cost of 2.1 million relating to the acquisition of Beta. 207.9 million given to the shareholders of the subsidiary company against 90 million share Alpha given to the shareholder of subsidiary company, and legal cost, documentation, some legal fees, whatever, it's 2.1 million. Alpha included these legal costs as part of the carrying amount of investment. Alpha ने investment का value पकड़ लिया 207.9 plus 2.1,
तो बन गया 210, 207.9 प्लस 2.1 बन गया 210 मिलियन। 210 मिलियन हो गया इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, एंड दे हैव रिकॉर्डेड दैट इन इट्स ओन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मान लीजिए आज मैंने कोई कंपनी का, सच में मैंने शेयर खरीदा था, वॉरी इंजीनियरिंग, 2 दिन पहले आईपीओ आया था। आई गॉट सम न्यूज कि 3000 में खरीदिए, 3600 हो जाएगा। वैसे हम करते नहीं है ऐसा, बट somebody told me, मेरा ही स्टूडेंट एक्चुअली, I taught him CFA in around 2000, maybe 1-2, I don't remember. अभी कनेक्शन है तो मैसेज किया, वो शेयर मार्केट में काम करता है, बोला भैया हम आपको सच बोल रहे हैं, यू बाई दिस शेयर्स एट 3000, इन 3 days इट विल बी 3600। हम कभी करते नहीं, हम सोचे चलो कोई बात नहीं है, सो आई परचेज 100 shares and by the day end it become 3572 only. So by the day end only 3600, story finished, tension khatam. But this is very risky. It's okay, I took the risk, but I mean to say that when I purchase the shares, there is some brokerage. Maybe I purchase for 3000, but the cost is 3000 plus brokerage. And when I sold the shares, then it is sale price minus brokerage. You can say brokerage is a legal expenditure. So the company purchased 90 million shares for 207.9 million. And then 2.1 million they incurred expenditures, brokerage, whatever, I don't know, man. The total cost of the investment is 210 million, which alpha I purchased share, I recorded in my balance sheet. My accountant will do the journal entry, 3,000 into 100, 3 lakh investment value plus the purchase cost, maybe say 1,000, 3 lakh 1,000 purchase cost. And then I sold for 3,430. I was not waiting 3,572 होने तक, किसको मालूम है यार। So 3,430 means 3,43,000 minus brokerage, say 3,42,000. So the sale price 342, 3,01,000, 41,000 gain approximately. When I purchase the share, it will be recorded at 3,01,000, including the cost of investment. So Alpha did that only in their financial statement. They have recorded the investment. They have recorded the 2.1 million as the cost of investment. But we discussed in the last class what? For group accounting, consideration given to the shareholders of the subsidiary company will be only treated as cost of investment. Any incidental expenditure, legal expenditure, consultant fees or anything which is not paid to the shareholder of subsidiary company, which is incidental expenditure, they will not be considered in IFRS 10 for goodwill calculation. They will not be considered from accounting point of view. Investment cost is correct, plus 2.1. But for group accounting, when we discuss IFRS 3 business combination, then they have said that for goodwill calculation, the cost of investment, only that cost which is given to the shareholder of subsidiary company. Any incidental expenditure is not treated as cost of investment. That cost is fully deducted in PL account as an expense. Suppose I am purchasing inventory. तो इन्वेंट्री खरीदने का खर्चा को पीएल में ही डालते हैं, उसको खर्चा दिखाते हैं। सो वैसे ही आपके लिए ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रुप के लिए ये घर की बात है। सो IFRS 3 says that 2.1 million is not a cost of investment. आपने cost of investment 210 लिखा है। For group accounting we will make it 207.9. And 2.1 you have added to investment, will be deducted from investment, cancelled, and 2.1 will be deducted from profit. Profit matlab parent company working note 5 retained earnings. You will start with the parent company retained earnings. Retained earning में से आप minus करेंगे 2.1 because it is an expense. It was recorded as an asset. Revenue expenditure recorded as capital expenditure. So you are recording revenue expenditure deduction from income. And the investment value for goodwill calculation will be not 210, will be 207.9. जब आप सम्स करेंगे डबल एडजस्टमेंट साथ साथ कर देना, भूलना मत. Because maybe I am solving in front of you. And if I am doing only 2.1, one place, other place I will do later, I will forget. My balance sheet will not tally. If you want that in the exam, maybe you are doing mistake.
but the balance sheet should tally. Then do the adjustment double at that moment only. Maybe it is wrong, but double जगह adjust कर दीजिए. From asset side, investment is going down. From liability side, retained earning going down. Balance sheet will tally. From asset side, investment is going down by 2.1. From liability side, retained earning is going down by 2.1. Balance sheet will tally. Maybe I am doing wrong, but the same amount of adjustment I am doing both the sides. Balance sheet will always tally. Because एक normal nature होता है. Balance sheet मिल गया, student खुशी. Balance sheet नहीं मिला, पूरा दुखी. So if you are doing this question first, because this is first, and you are not able to tally the balance sheet, in the entire 3 hours, you will be disturbed. Maybe you are doing wrong, balance sheet will always tally. Do the amount of adjustment at both the sides simultaneously. Maybe wrong, same time. When I will solve, I will do same time all the adjustment. अभी मैं solve नहीं कर रहा हूं, अभी मेरे को discuss करने में 1.5 घंटा लग जाएगा. Solve करेंगे उसके बाद, आज लिख के करेंगे. चाहे रात का 2 बज जाए. बैठना है बैठिए, सोना है सोइए, आपकी मर्जी है. I will not leave the class without solving this problem fully in writing and without clearing all the doubts whatever mail you all have sent. इतना आप पढ़ेंगे, चाहे रात का 2 बज जाए, जो हो जाए. ठीक है अदित जी, आपको जाना है, सोना है, आप सो सकते हो सर. सुबह आओगे नहीं, रात को सोओगे, जिंदगी में सोते ही रहना सर, समझ लेना. जब मालूम है क्लास है, चुपचाप पढ़ाई करो. ठीक है अभी तक खाली फर्स्ट पैराग्राफ का बात हुआ है. फर्स्ट पैराग्राफ इज फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग द परसेंटेज, द डेट 90/120, 75%, 25% NCI, and 1st January to 31st December, 3 years. And the second thing, the cost of investment breakup. The cost of investment is amount paid to the shareholder of subsidiary, but other incidental expenditure are not cost. They are expense. They will be recorded as an expense in PL account. They cannot find part of cost of investment for it. ये सब बात हम लोग को लिखना नहीं है. That they have said in the question in the requirement. They have said in the requirement, no write-up explanation. But अगर आप सीमा इंस्टीट्यूट, सीमा के क्वेश्चन पेपर का आंसर दे रहे हैं, सीमा वाला यही चीज बोलेगा, लिखो. अरे भैया, लिखना और सबमिट करना अलग बात है क्या? If I know I can write, if I know I can apply the adjustment, there is no difference, I think. Language will be used. You can't copy book language कि ऐसे लिखा हुआ है, comma, full stop, not possible. So I don't feel any difference between IFRS FR exam and CIMA exam. बात समझने की है सर. On 1st January 2016, the individual finance बोलेगा आपने पूछा नहीं सर, कुछ नहीं समझ, मैं बाद में पूछूंगा, अभी शांति से सुनते रहिए. अभी बीच में कोई क्वेश्चन रिस्क नहीं करना है. और यहां पर आप बकबक लिख रहे हैं, मैं चैट भी देख नहीं रहा हूं. आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट. बेटर यू कॉन्सेंट्रेट, आई विल गिव यू टाइम टू आंसर. अभी मेरे को शांति से बोलने दीजिए. अभी आपका बोलने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैं एक चीज को 20 बार बोलने वाला हूं. Whatever I said, cost, percentage, this, that, again I will say, again I will do the. तो आपको 20 बार तो मैं ही बोलने वाला हूं. आप काहे को टेंशन ले रहे हैं? आस्ते चलते हैं. जब मैं बोलूंगा तब आप बोलेंगे. तब सब कोई बोलने वाले हैं क्लास में, सर अभी कुछ नहीं बोलना है सर, फिर से रिवाइज करना होगा, फिर से बस यही बोलने वाले हैं आप लोग, मालूम है मेरे को. चलते हैं. On 1st January 2016, the individual financial statements of Beta showed a balance on retained earnings and other components of equity, 35 and 25 million respectively. The individual financial statement of Beta showed a balance on retained earnings and other components of equity, 35 and 25 million. Retained earning means, suppose subsidiary company is doing business for last 10 years. On 1st January 16, this is 11th year. So last 10 year, whatever profit they have generated, minus the dividend given to the shareholders, the balance profit is 35 million. And other components of equity means maybe revaluation reserve, maybe something else. कोई भी ऐसा part which is a reserve, but which is not a retained earning, you can name other components of equity. OCE. अभी तक हमने जितना भी पढ़ाई किया है, OCE बहुत कम बार आया है, आगे आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये सब में. लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड, अदर देन रिटेन्ड अर्निंग, एनी शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग,
Any other reserves, you can say other components of equity. You can say share premium, other components of equity. You can say revaluation reserve, other components of equity. They are saying retained earning and OCE each 35 and 25 and 3 year back. यहां पर ये जो फिगर्स है, ये वाला जो फिगर्स है, in the balance sheet in subsidiary, it is 1,20,000 share capital, 85 is retained earnings, and other components of equity is 35, 85 and 35. And here the figures are 35 and 25. Why the difference is there, man? In the balance sheet, the figures are 85 and 35. Here the figures are 35 and 25 for the subsidiary company only. Why the figures are different, Rohit ji? सर ये 3 साल पहले का ये डिटेल दिया हुआ, 3 साल बाद का फाइनेंशियल है। एकदम सर, मन को बहुत तसल्ली। मेरे को लगा आप ये भी नहीं बोलोगे, तो मेरे को लगा बहुत चोट लगेगी। ये 3 साल पहले का फिगर है, वो 3 साल बाद का बैलेंस शीट है। दो बैलेंस शीट, दो अलग अलग डेट को है, फिगर्स तो अलग अलग ही रहेगा ना। क्या ये फिगर 85 से ज्यादा हो सकता है? 35, 95 हो सकता है कि आफ्टर 3 year is it 85 in the balance sheet and 3 year back it was 95? Is it possible, रोहित जी? हाँ सर, पॉसिबल तो हो सकता है। कैसे, क्यों पॉसिबल हो सकता है सर? मतलब ये पहले ज्यादा था, अभी कम है वहाँ पे। हाँ, तो क्यों कम? तो सर लॉस हो भी सकता है ना कंपनी बस, हाँ, बिजनेस में लॉस नहीं होता है क्या, और क्या? हाँ तो हम लोग का 3 साल में लॉस हुआ है, यहाँ नहीं हुआ सर, फायदा हुआ है यहाँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ओके। ये 3 साल पहले का क्या काम आने वाला है? जब हम लोग गुडविल निकालेंगे तो वी रिक्वायर सब्सिडियरी कंपनी नेट एसेट्स ऑन 1st January. नेट एसेट्स मीन शेयर कैपिटल, रीटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब नहीं होने से हम गुडविल निकालेंगे कैसे? हम कैसे बोलेंगे कि हमने रिलायंस का शेयर 3,000 रुपए में लिया और उसका शेयर वैल्यू इतना, उसका प्रॉफिट इतना, उसका फेयर वैल्यूएशन इतना, तब तो बोलेंगे ना एक्स्ट्रा गुडविल। सो गुडविल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन ऑलवेज एडजस्टमेंट में देगा, आपको दिया हुआ है। गुडविल निकालने के लिए जहां बात करेंगे वहां डिस्कस करेंगे। On 1st January 2016, the carrying amount of individual assets and liabilities of Beta in its own financial statement were the same as their final fair values, with the exception of, on 1st January, whatever the assets value in Beta in the balance sheet and their fair value are same. मतलब बैलेंस शीट वैल्यू ऑन 1st January, वी डोंट नो, वी हैव बीन गिवन द बैलेंस शीट वैल्यू ऑन 31st December. ये 1st January 3 साल बोलता है जो भी फिगर बैलेंस शीट में था फेयर वैल्यू वाज सेम, विद द एक्सेप्शन, कुछ का फिगर अलग था। किसका बता रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 90 million and a fair value of 108 million. The estimated useful life of this property plant and equipment on 1st January 16 was 4 years. बोलता है on 1st January 16 there was a property plant and equipment with subsidiary whose value in the balance sheet was 90 million but the fair value was 108 million, and from that 1st January 2016 the life of this property plant and equipment was 4 years. Out of those 4 years, 3 years is already gone. 16 full, 17 full, 18 full. Out of 4 years, 3 years already gone, but they are giving this information. I said in the last class कि Reliance share price is 1350. If you recollect, if you have not done the recording, start doing the recording. Now the recording is accumulated. This one, that one, पहले का। तो साथ साथ नहीं पढ़ने से तो होएगा ही गड़बड़ सर। 3 दिन आपको ब्रेक दिया जा रहा है मन से पढ़ने के लिए, 2-2 घंटा। आप बोलेंगे 2-2 घंटा में होता नहीं, जरूर होएगा। आप पढ़िए तो सही साथ साथ। आप सब बैकलॉग कर दिए, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, और मैं अगर डेली पढ़ाता तो सबको फेल कर देता। अभी तक तो 15 दिन पहले सिलेबस खत्म हो जाता। इफ आई वुड हैव टेकन द क्लासेस डेली, तो तन्मय जी अच्छा होता क्या? सौरजब खान, वुड इट बी बेटर? आई वुड बी टेकिंग क्लासेस फ्रॉम 13th of September डेली। मोटा मोटी 5-10 अक्टूबर तक खत्म सब, उतना ही क्लास होता है सर। है क्या होता? बर्बाद कर देता सबको। कि तन्मय जी मालूम है ना, 5-10 तक तो पढ़ना ही नहीं चालू किए थे, हैं? और यहाँ तो खत्म हो गया। ये आपका नहीं है, जनरल है यार। बिकॉज इंसान का फितरत है, जब तक डंडा नहीं पड़ता है ना, पढ़ता नहीं है। बात ये यार,
काम तभी हम लोग करते हैं जब समय आता है, क्या करें, इंसान को ऐसा ही भगवान बनाया है। सो आई एम फॉर यू ऑल ओनली टेक द क्लासेस 2 days a week, नॉट दैट मेरे को कोई मजा आ रहा है, हम भी अपना 15-20 दिन में सब पढ़ा पढ़ो के खत्म, मजा करो, क्या टेंशन है, मजा मेरे लिए ना, सबको फेल करवा देंगे यार। तो अगर आप 3-3 दिन पढ़ के क्लास के साथ, तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता यार। एक सब्जेक्ट आप क्लास के साथ नहीं रह सकते तो क्या होएगा। हर क्लास, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास को यही बोलता हूं, कोई नहीं सुनता है, ठीक है, सब नीचे से कान के मारता है यार, क्या करें। नाउ we discussed in the last class Reliance share price 1350, but in the balance sheet of Reliance share capital is 1 rupee per share, like यहाँ लिखा हुआ है ना $1 per, Reliance balance sheet will show you $1 per share. In Reliance retained earning reserves जोड़कर मान लीजिए 1000, जोड़कर divided by number of shares 1000, so 1001. But in the balance sheet of Reliance asset side, so many assets are there which are not at fair value. If you do the fair valuation, whatever the fair valuation gain, you divide by number of shares, suppose it is coming to 100, matlab 1201. For buying one share, 1201 should be the value. But the market price is 1350. So we are paying 1350. So how much we are paying extra? 149. That will be treated as goodwill. We are paying for the goodwill of the company. प्रकाश सराफ शेयर खरीदने के टाइम पे ये किया है, कभी नहीं किया, ना कभी करने वाला है। हम थोड़ी ना कंट्रोलिंग स्टॉक ले रहे हैं, हम तो ऐसे ही 250-100 शेयर लेते हैं, उतना ही औकात है भाई। आई एम नॉट टेकिंग 90% ऑफ रिलायंस, अंबानी के पास, हमारे पास कहां से आएगा, इम्पॉसिबल। बट व्हेन कंट्रोल दिस दैट इज देयर, दे विल थिंक अलोंग दोज लाइंस कि हाउ मच यू पेड एक्स्ट्रा, दैट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। तो आपको ये रिजर्व से शेयर कैपिटल भी आपको पता है, और एसेट्स का वैल्यू 90 के बदले 108, 18 मिलियन मोर। आप यू हैव गिवन कंसिडरेशन अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग, अदर कंपोनेंट, अगेंस्ट फेयर वैल्यूएशन, एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया दैट विल बी गुडविल। सो दिस फेयर वैल्यूएशन विल बी एडजस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नाउ वी आर डूइंग दिस 18 million adjustment now. We are increasing the assets value. We are incorporating in goodwill. But this 18 million was not recorded 3 years back. उस समय नहीं, because parent separate, subsidiary separate. Parent is not going to record 18 million for subsidiary in their books. वो सब नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अभी लिख रहे हैं, 3 साल पहले का काम अभी कर रहे हैं। So for 3 years, the depreciation should have been done on 18 million, which was not done. 18 million divided by 4 into 3. 18 million divided by 4 into 3. For 3 years, the total depreciation will be coming, which was not charged, which need to be charged. That depreciation will be adjusted from the assets value. In the balance sheet, 18 million assets value will increase. The depreciation of 3 years will be deducted. 18 million will be adjusted in goodwill because it is beyond this whatever we paid extra, and depreciation will be adjusted from profit. Depreciation will be adjusted from 3 years income, because depreciation is after acquiring the shares. While acquiring the shares, the value was 18 million more. And after acquiring the shares, the depreciation will start for 3 years. Depreciation is a post-acquisition adjustment, but fair valuation is a goodwill adjustments. कैसे करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा फीलिंग दिलाया, थोड़ा सा। सेकंड, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, बाद में सुनते जाइए खाली। अभी आप बोलेंगे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा और आप ठीक से पूछ भी नहीं पाएंगे। शांति। An internally developed brand name which had a fair value 30 million on 1st January 2016, the directors of Alpha estimated that the brand name had a residual life of 10 years on 1st January. We are talking about IS 38. Suppose any asset which is self-generated. While teaching IS 38, I gave the example that somebody called me and said that we have animation video of 70 hours. Bola, this animation video have value 70 hour into 60 minutes into 60 seconds into 70 rupees per second. So the value is coming in crores. You give the fair valuation certificate so that we can record in our books and blah, blah, blah. We can take loan and all that. We can grow our business. I said no.
Because any assets for which cost is not identified, for which you don't know how much cost you have incurred, you can't record those assets in the balance sheet, like goodwill. Saraf Academy goodwill is not there in the balance sheet because I have not incurred specifically any cost. The goodwill is because of my teaching, because of my staff, because of my product, bulumba, but so many things are there. But there is nothing that exactly I have incurred this cost to develop goodwill. ऐसा कुछ नहीं है, sir. Any self-generated asset for which cost is not identified cannot be accounted for as per IAS 38. So subsidiary company internally developed brand. Subsidiary company is not recording 30 million in the balance sheet because it is self-generated. Cost is not identified. But now the parent company is giving consideration to buy the business of subsidiary. Consideration to buy the business. So parent company is giving consideration to buying this brand value. Parent company is giving money. You are giving money, you can identify the cost, you can record. So in the group account, 30 million can be recorded as an intangible asset because consideration is given. It is not goodwill. The goodwill will be if we paid beyond 30 million extra. But 30 million is also a type of revaluation. Revaluation is not only 90 to 108. Something which is not there in the balance sheet and has some value, that is also revaluation. So for the subsidiary company, parent company need to pay 30 million for the brand value. The group accounting will be recording brand value 30 million as an asset. But in the standalone subsidiary, it was not an asset because the parent company is giving consideration to get the brand. And this 30 million will be depreciated, amortized for 10 years, they have said. Out of 10 years, 3 years is already over. 16, 17, 18. So 30 divided by 10 into 3. That means 9 million. 9 million is the depreciation in 3 years, also to be accounted for. 9 million will be deducted from profit. 30 million will be coming in the balance sheet. 30 million will be adjusted in goodwill. And 9 million will be adjusted from the assets value also. How it will be presented, adjustments and all that, we are coming. Yani ki they have given the percentage holding, the breakup of cost of investment, some expenditures which should not be part of investment. Then they have given the retained earning and other components at that time so that goodwill can be calculated. They have given fair valuation of 2 items. One is property, plant and equipment and one is brand. Intangible asset. Yes, sir. Brand or intangible assets. The fair value adjustment should be regarded as temporary differences for the purpose of computing deferred tax. On these 108, 18 million and all that, they are treated as temporary. Matlab we need to calculate deferred tax on this. The relevant rate of income tax each 20%. The directors of Alpha elected to measure the non-controlling interest on 1st January by using proportion of net assets method. So non-controlling interest 25% fair value is not given. They are saying whatever the net assets, you calculate 25% of that. Now, first of all, deferred tax. If the asset value in the books, if the assets value in the books is greater than the tax base value, sometimes somebody says that, sir, how to calculate tax base value? Sir, मेरे कोई नहीं आता, आप कहां से निकालोगे? Somebody asked in WhatsApp in class how to calculate tax base. Tax base value आपको नहीं निकालना है, क्वेश्चन में देगा माने they will say asset value this, depreciation as per income tax is this, so balance is the tax base. मेरे को थोड़ी ना आता है. और accounts में asset value this, depreciation as per accounts is this, balance. We want to say that here 18 million is a property revaluation, fair valuation. 30 million is a brand fair valuation. You are recording 18 and 30 million in the books. But in the income tax act, this type of concept is not acceptable. In the income tax act, there is no revaluation, there is no depreciation on all these bullshit. Nothing. Anywhere in the income tax, neither in India, वगैरह.
So there is increase in the value of assets in the books by 18 million in respect of property. But in the income tax base, it is 90 only. It is not 108. So the assets value as per books is more. Or we can say the assets value has gone up. We have recorded in the books. Now we have recorded the income also, not in PL, but income. But in the Income Tax Act, when the income will arise, when this asset will be sold out, 4 year, 5 year, whenever, then the income will arise. So the Income Tax Act, the profit will arise later. We will pay tax later. But in books of accounts, profit arises today only. We have recorded the income today only. So in the books of accounts, whatever the profit is extra, we need to pay tax. We need to record tax, which we will pay later to Income Tax Department. So that will be deferred tax liability and expense. We discussed in the class, if assets value as per books is more as compared to tax base, on the difference, deferred tax liability. So on 18 million, on 30 million, there will be deferred tax liability at the rate of 20%. And that deferred tax will be recorded as an expense also. We need to record the deferred tax on these assets value adjustments. So deferred tax will be coming in the balance sheet as a liability, and deferred tax will be deducted from the profit as an expense. They are saying that in these two items, deferred tax need to be incorporated. The assets value as per books is more than the tax base value. Somebody will say tax base to diya nahi, are dene ka. Tax base value is same 90, and for brand it is 0. But in the books it is 108 and it is 30. So in the books the value has gone up by 48. On 48 there is a deferred tax liability. You are not paying tax now, you will pay later, but in the books you need to record now. Deferred tax expense and liability, we need to incorporate that, they are saying. And NCI fair value is not given. What we discussed, when the NCI fair value is not given, we are actually not able to calculate full goodwill. We are able to calculate only 75% goodwill. Because when the fair value is given, goodwill value will be higher. When it is not given, it is actually goodwill value is lower, it is only parent goodwill. Then in that case, if there is any impairment, then impairment loss will be bear only by the parent company, not NCI. In this question, if there will be any impairment loss, I don't know, we need to check. Then the impairment loss will be recorded only in parent company profit. NCI, no impairment loss, because we are not able to calculate goodwill full, because NCI fair value is not given. This entire adjustment in the exam will be of 7-8 marks. What they will be saying about which part, 1 mark, that they know. But this entire will be giving you 6-7 marks in the exam. And there is no partiality. Wherever the marks are to be allotted, I will be applying that in the checking your paper and all that. किसी के साथ कोई partiality नहीं होता. किसी को भी लगता है मेरे को नंबर कम मिला, आपको ही लगता है, वो आपको लगते रहे. कोई solution नहीं है आपका. Because marks देने का right ही नहीं है किसी को. For this step 1, for this step 1, for this step 1, ऐसे है. 100 marks on 100 steps. So for that reason, there is no ifs and buts. I received less marks and all that. आप कहानी बनाते रहिए, कोई सुनना नहीं है आपका कहानी. तो इस पूरा का एडजस्टमेंट का ध्यान देंगे. मार्किंग गाइडलाइंस यू विल फाइंड 6 to 7 marks on investment, on goodwill, on fair valuation, on depreciation, on adjustments, on deferred tax. बहुत सारा चीज है ना, all. And it is correlating with IAS 16. It is correlating with IAS 38. It is correlating with IAS 12. It is correlating with investment. You can say we will do financial instruments. It is correlating with group accounting, goodwill, IFRS 3 business. सब चीज तो एक साथ आ रहा है. Revaluation, intangible asset, depreciation, amortization, deferred tax, कोई छूट रहा थोड़ी ना. एक साथ सारा टॉपिक आ गया है. बोला बहुत नाइंसाफी है, बट है भाई सर, जो है सो है. Nothing can be done. If you have not understood something, don't take tension. मेरा खत्म नहीं हुआ है, बहुत टाइम बाकी है अभी. अभी तो बहुत आपको माथा खराब करने वाले हैं. Don't take tension. जब मैं बोलूंगा तब आप बोलेंगे. मैं सब चीज को कम से कम अभी 15 बार और बोलने वाला हूं. मिनिमम 15 times. ठीक है. Relating to goodwill, they are giving third exhibit. 3 years after acquisition, that is on December 18, where we are standing. The directors of Alpha carried out an impairment review of goodwill on acquisition of Beta.
मतलब हम लोग गुडविल का इंपेयरमेंट कर रहे हैं। वैसे इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल नीड टू बी डन एवरी ईयर because it is an indefinite life asset. So every year impairment testing need to be done. Current year we are doing the impairment testing. For the purpose of impairment review, the directors of Alpha considered that beta was a single cash generating unit. हिमांशु जी, पिछले दिन का क्वेश्चन आपका याद है? तो मेरे को जन्म नंबर याद रहेगा, पूछ हाँ लीजिए हाँ कल सर, बाद कि आपने क्लास वही में है। क्या पूछा था सर। इसलिए आप लोग मेरे को कभी झुठला नहीं सकते साहब, मेरे को याद रहता है। क्या करूं यार, बहुत दिल से याद रखते हैं आपको सर। हर एक जन को। रोहित जी, जो जो क्वेश्चन पूछा ना आज से 13 क्लास तक सब याद है मेरे को, ए टू जेड सब सर। ऐसे दिल में बस जाता है यार, आप लोग क्या करें। सो मेरा बोलने का मतलब है, दे आर सेइंग दैट व्हेन वी विल कैलकुलेट इंपेयरमेंट, only goodwill impairment is not possible because it is a cash generating unit. The entire subsidiary is a cash generating unit. They are correlating IAS 36 sir. The result of the impairment review, value in use, fair value less cost of disposal. No impairment of goodwill in beta has been necessary in last 2 years. खाली current year impairment होगा तो होगा, पहले नहीं हुआ है। When we studied IAS 36 impairment, then we studied for cash generating unit. We will compare the carrying value of the assets with the recoverable amount of the cash generating unit. Recoverable amount is higher of the two. Assets को सेल करके जो पैसा आएगा 2,85,100, और एसेट्स को यूज करने से जो पैसा आएगा 3,05,600, हायर ऑफ द टू। यूज करने से वी विल बी गेटिंग मोर, वी विल बी सेलिंग दैट वैल्यू 3,05,600, बट दिस हायर वैल्यू इफ लोअर देन द कैरिंग वैल्यू, suppose the carrying value is 3,20,000 and the recoverable amount is 3,05,600, the difference approximately 15,000 impairment. That impairment will be adjusted from goodwill only. If the goodwill amount is less than 15,000, then the balance impairment will be adjusted from other assets value. सब्सिडी का और भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट, ये सब वहां से लेस होगा। किसमें से कितना लेस होगा? इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स। We need to check what is the impairment, if any, and whether the impairment is greater than the goodwill or less than the goodwill. Consolidation sum में always impairment will be within the goodwill amount only. Goodwill आएगा 25, 30, 40, 50,000. Impairment is 10, 20,000. So it will be just deducted from goodwill. सीधा सीधी impairment is not given, बोला थोड़ा मेहनत करो। सब्सिडी का नेट एसेट्स को कंपेयर करो रिकवरेबल अमाउंट से, डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस, दैट इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द गुडविल। निकालेंगे हम लोग, अभी तो मेरे पास फिगर्स वगैरह नहीं है। इतना है कि हायर ऑफ द टू नीड टू कंपेयर विद द नेट एसेट्स वैल्यू। वो आएगा तब देखेंगे, तो थोड़ा देर लगेगा, जब फिगर्स आएगा तब बात करेंगे। बट IAS 36 यहां से रिवाइज हो रहा है, मतलब आपका ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर आधा से ज्यादा बात तो पुराने टॉपिक से। बहुत नाइंसाफी है, बट है सर, क्या करें। फोर्थ, अल्फा सेल्स प्रोडक्ट्स टू बीटा, अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया आज वाला, एक दूसरा को सामान बेच रहे हैं। अल्फा अप्लाइज अ मार्कअप, मार्कअप भी आ गया ऑफ 1/3 टू द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स व्हेन इनवाइसिंग देम टू बीटा। On December 2018, the inventories of Beta included products which had been purchased from Alpha. बोलता दिसंबर में बीटा के पास गुड्स है जो अल्फा से आया है। The invoiced amount of these products by Alpha to Beta, $20 million. At December 18, there were no amounts owning by Beta to Alpha in respect of this. एक दूसरा को पैसा नहीं देना देना, पैसा लेना देना हो चुका है। There is no dues between them. But the inventory of Beta includes 20 million came from Alpha. So Rohit ji, what will be the amount of unrealized profit? It is zero or it is something? How we will calculate? Because ये तो अभी बात की है थोड़ा देर पहले, इसीलिए। क्या भाई? सर लेकिन ये पे किया है, लेकिन उसमें उसके प्रॉफिट में तो ऐड हो गया ना वो अल्फा के 20 मिलियन। हाँ, तो क्या अनरियलाइज प्रॉफिट 20 मिलियन है? हाँ ठीक है। नहीं 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 सर,
20 मिलियन नहीं है, अच्छा तो कितना है सर? उसमें मार्कअप ऐड है सर। क्या क्या करे सर, क्या करे? तो सर मार्कअप निकालना पड़ेगा ना हम लोग को, निकालिए कॉस्ट तो सर, कॉस्ट हटा है। निकालिए सर। ओमर यू विल नॉट से, ही विल से। When he cannot say, then you will say. ओके, बोलिए रोहित जी। हाँ सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक मिनट। नहीं क्या कर रहे हैं हम? कैलकुलेटर है आपके, बोलना है यार क्या करना है, क्या कर रहे हो तुम? इंटू पिंटू क्या कर रहे हो? वही तो नहीं समझ में आ रहा, मतलब कैसे निकालो वो फिर ये क्या, मार्कअप। वही तो बोल रहे हैं कि फिर इन दैट केस क्यों बोल रहे हो कैलकुलेशन? हाँ सर मेरे को बोलो, हम कैलकुलेटर है तुम्हारा, तुम बोलोगे कैलकुलेटर चलेगा मेरा। एक मिनट, ठीक है उमर, यू से। ही कैनॉट से सर। सर मुझे पूरा नहीं आता, बट विल हाँ यूज द बोलिए ना सर। हाँ यूनिटरी मेथड जिसमें हम कॉस्ट 100 एज्यूम करेंगे, हाँ फिर और उस पे फिर 1/3 जो होगा परसेंटेज, 33.33। 33.3% का हम वो निकालेंगे। फिर और 3%, और उससे फिर हम ऊपर ऐड कर देंगे प्राइस को, और फिर हम उससे यूनिटरी मेथड से फिर हम हाँ, क्या कंपेयर प्राइस ऐड करेंगे। कर देंगे समझ में नहीं आया, और आगे आप इतना समझ में आया, आप प्राइस ऐड कर देंगे माने? नहीं नहीं, आई मीन के वो 100 हम कॉस्ट रखेंगे, उसका 33% करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे। इफ आई एम श्योर। हाँ तो क्या लगाएंगे आगे, बोलिए तो सर। ये ठीक है, और उसके क्या करें? बाद आगे नहीं आ रहा। आदित्य, विल यू से? मिस्टर आदित्य। सर इसका तो मार्कअप है ना आपका 20 मिलियन के अंदर में, तो फिर 20 मिलियन पे ही 1/3 शायद निकालना पड़े। माने 20 × 1/3 आप बोल रहे हो? हाँ 20 मिलियन इंटू 1/3 आप बोल रहे हो, है ना? हम एक ट्राई दे क्या? हाँ हाँ एक बार ट्राई करें। कौन, राहुल साव? नहीं आप नहीं करेंगे सर। रुक जाइए आप। फैजा यू रिप्लाई। फैजा यू से। फैजा आप बताइए। ठीक है राहुल तुम ही बोलो यार, बोलो। इन लोग वही चीज ट्रिक किया जो आपने बोला था, इन लोग 1/3 टू द कॉस्ट बोला मार्कअप, बट हाँ द इनवॉइस अमाउंट है वो सेल प्राइस है। तो हम हाँ लोग अज्यूम करेंगे, तो अगर हम लोग का कॉस्ट प्राइस है 100, तो और अगर इधर 1/3 दिया तो 33.33 होगा, तो हम हाँ लोग का प्रॉफिट हुआ 33.33, तो सेल हाँ, प्राइस होगा 133.33। ठीक है तो फिर। अगर इधर 20 मिलियन है, तो फिर वो होगा 33/133.33 इंटू 20 मिलियन। थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम बोल देता है हाँ कि आई सेड परसेंटेज किस पे, दिस इज ऑन कॉस्ट बट 20 मिलियन इज सेल वैल्यू. So if I would be given cost, then I could apply 1/3, but this is sale value. I cannot apply profit on cost on sale. तो मेरे को assume 100 cost, 100 का 1/3 33.33 profit. So cost plus profit sale value 133.33. When 133.33 is the sale value, profit is 33.33. So when 20 million is the sale value, profit is 20 into 33.33 by 133.33. Basically 1/4. So 20 into 1/4 is coming 5 million. In 20 million, 5 million is income, 15 million is cost. अब चेक कर लीजिए, 15 का 1/3 is 5 million. If the cost is 15 million, 1/3 of 15 is 5 million. So the sale value is 20 million. आपको सेल में से प्रॉफिट निकालना है। क्यों निकालना है? Because that profit is not realized. The goods are still there. So when it is not sold out, there is no profit. So profit निकाल के उसको हटाना पड़ेगा. This profit, unrealized profit, is coming 5 million. If they would have said 1/3 margin, then I would have done 20 into 1/3 जो आदित्य जी बोल रहे थे, because margin means on sale, sale is given. So 20 into 1/3, which will be coming 6.67.
जिस पे परसेंटेज लगाना है, इफ इट इज गिवन अप्लाई, इफ नॉट गिवन एज्यूम 100 यूनिटरी मेथड लगाइए। तो आपको यहां पर ऑन कॉस्ट दिया और ये सेल प्राइस है, यूनिटरी मेथड लगाना होगा। अब ये जो 5 मिलियन आ गया, इसका करना क्या है रोहित जी? 5 मिलियन तो निकाल लिए, व्हाट वी विल डू विद दिस 5 मिलियन, क्या करेंगे हम लोग? सर वो वर्क अल्फा का है ना सर, वर्किंग 5 में लेस करेंगे ना सर 5, और बस और सर फिर उसका इफेक्ट होगा कंसोलिडेशन स्टेटमेंट पे। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से लेस करेंगे। हाँ इन्वेंट्री वैल्यू को ग्रुप के लिए 15 बनाना है, 20 नहीं। और प्रॉफिट में से 5 मिलियन लेस करना है, जिसमें प्रॉफिट दिखाया है, अल्फा ने दिखाया है, अल्फा का प्रॉफिट लेस करेंगे। अल्फा का प्रॉफिट वी विल बी रिकॉर्डिंग इन वर्किंग नोट 5, प्लस माइनस करके, तो वहां -5 करना है, निकालना है फिगर और एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट बैलेंस शीट और वर्किंग में, और फिगर्स कैलकुलेशन सही सही। इसका भी कुछ 2 या 3 नंबर रहेगा, फिगर निकालने का, सही जगह प्लस माइनस करने का। 2 रहेगा 3 रहेगा मालूम नहीं है, आपने सब रॉन्ग किया, बट ये एडजस्टमेंट सही किया तो 2-3 नंबर तो मिलेगा ना। बैलेंस शीट नहीं मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 में 99% स्टूडेंट का बैलेंस शीट मिलता नहीं है। सीरियसली आई एम सेइंग, सो मेनी एग्जाम्स गिवन इन लाइफ, CA इंटर, CA फाइनल, CMA इंटर, CMA फाइनल, CFA एंड यू कैन से सीमा, सो मेनी एग्जाम्स। साला किसी में कभी बैलेंस शीट नहीं मिला है जीवन में, एग्जाम में कभी? क्या बात है। आज तक जो भी कोई एग्जाम दिया है मैंने, कोई भी एग्जाम में आई वॉज नॉट एबल टू टैली द बैलेंस शीट। बोलेगा आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच बात बोल रहा हूं, लेकिन कोई एग्जाम में फेल नहीं हुए जीवन में आज तक, बैलेंस शीट कभी नहीं मिला हो। बिकॉज एग्जाम का क्वेश्चन करेक्ट इज नॉट ऑन बैलेंस शीट टैलिंग, बट हम लोग का एज ए स्टूडेंट टेंशन हो जाता है, इफ द बैलेंस शीट डजंट टैली, हम लोग को लगता है सब गलती किए। आप डबल एडजस्टमेंट को सही रखिए, बैलेंस शीट मिलेगा। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो टेंशन मत लीजिए भाई, बैलेंस शीट मिलने से नंबर आएगा और नहीं आएगा ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा अल्फा हेज, दिस इज एरिया विच वी हैव नॉट स्टडीड, एंड दिस एरिया इज नॉट देयर इन ACCA FR सिलेबस। ये खाली IFRS में है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डेरिवेटिव इज ओनली देयर फॉर IFRS एग्जाम, इट इज नॉट देयर फॉर ACCA FR स्टूडेंट। मतलब अगर FR स्टूडेंट रोहित जी आप नहीं भी समझ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, स्किल लेवल के बाद प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे, वहां पर काम आएगा। बट अभी तक तो मैंने किसी को भी नहीं पढ़ाया है। इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड टू एनीबडी, तो व्हाई नॉट रोहित? ठीक है, तो एक बार ये दिमाग से निकाल दीजिए, कहां है, नहीं आएगा, चुपचाप से समझिए। ठीक है, ऑन 30th September 2017, Alpha entered into a firm commitment to purchase a large machine from an overseas supplier on 31st March 2018. 30th September 2017, we are standing on December 18. We are standing on December 18. They are talking about September 27, September 17, around 1.25 year before we are standing. Ki Alpha parent company is going to purchase a machine, and the payment for the machine will be done in March 18 after 6 months. Agreeing to pay in dinars, the functional currency of the supplier. मतलब हम लोग दुबई से मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं फैजा से, और फैजा को हम लोग को पेमेंट करना है 6 महीने बाद। सितंबर में मशीन ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू पे टू फैजा इन दिनार 6 मंथ्स के बाद। ऑन सितंबर 2017 जब मशीन ले रहे हैं, Alpha entered into a derivative contract with a bank in order to provide protection against possible future currency movements between dollar and dinar. The derivative contract was an effective hedge. क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए आज एक दिनार का वैल्यू इट्स से $25। नाउ डोंट फाइट, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली। फैजा बोलेगी सर रेट ये है, नहीं जरूरत है। Suppose today $1 value is 25 dinar. But after 6 months, when we will make the payment for dinar, maybe the dollar value and dinar value will be different. Definitely it will be different. $1 value will not be 25 or will not be something else. And because of that, we are suffering loss. Because of that, हम लोग को दिनार पे करने के लिए डॉलर we need to use more and all that. ऐसा हो सकता है। As a business, we don't want that. So we have entered into a contract
मे बी a derivative in market, मे बी with a bank or anybody. आप उस कॉन्ट्रैक्ट में मत जाइए, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप, देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मेनी थिंग्स आर देयर. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. व्हाटएवर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है कि इफ सपोज अगेंस्ट दिनार you need to pay more to supplier in terms of dollar, then in that contract you will get that much gain. मान लीजिए दिनार के बदले डॉलर, आपको $1 लाख बेसी देना पड़ रहा है, तो आपका जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको 1 लाख का फायदा हो जाएगा. यानी कि यहां से 1 लाख आएगा एंड यू विल पे टू द सप्लायर 1 लाख एक्स्ट्रा, यू विल नॉट सफर लॉस. बट अगर मान लीजिए आपको कमती पेमेंट करना पड़ रहा है बिकॉज फेवरेबल रेट, सो आफ्टर 6 months व्हेन यू पे अगेंस्ट दिनार यू नीड टू पे $1 लाख लेस, तो आपने जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें 1 लाख का लॉस हो जाएगा, आपको वहां 1 लाख देना पड़ेगा. दैट मीन्स बाय डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल हैपन, there will be changes in the foreign exchange rate, but we will not suffer loss or gain, because if we need to pay more in the derivative contract we will gain that much gain, and if we need to pay less then in the derivative contract we will suffer that much loss. बोलेगा ऐसा क्यों करेंगे भाई, हमको बिजनेस करना है, हमको फायदा लॉस नहीं चाहिए. I want to do business, I don't want to suffer loss or gain because of foreign exchange fluctuation. तो हमने ऐसा कर लिया. कंपनी ने ये हेजिंग, इफेक्टिव हेज मतलब मोटा मोटी whatever you need to pay to the supplier, whatever loss you will suffer in that, exactly mota moti that same amount of gain will arise in your other hedging contract, in your other derivative contract. It will be effective means बरोबर 100% तो नहीं होता, but 95-97% होता है. And if it is greater than 90%, it is called effective hedging. Hedging का मतलब होता है you are doing this not for gaining, for safeguarding from any loss which you may suffer. But if somebody is doing not for hedging, for speculation, like suppose I do in the share market speculation, कोई hedging नहीं है, बस ऐसे ही सौदा करना है, फायदा उठाना है, नुकसान सहना है. So I am not coming in this category, man. I am not this person, because I am doing speculation. Speculation is not hedging. The derivative contracts are done by hedgers and speculators both. But this company is doing hedging. They are purchasing some assets. For that, they need to pay foreign currency. They may need to pay more for foreign currency. So they are doing some hedging contract so that they will be able to safeguard themselves. ये बात को समझना है पहले. Not going to future option वगैरह, सिंपल. आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी आएगा जाएगा, नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें आपको एग्जैक्टली अपोजिट होगा. अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन में लॉस, डेरिवेटिव में गेन, एक्चुअल ट्रांजैक्शन में गेन, डेरिवेटिव में लॉस बराबर होगा. When it is going to set off each other, they are called effective hedging. हम लोगों ने ये किया है. आगे क्या बोल रहे हैं? On December 31st, 2017, the derivative had a positive fair value of 22 million. Derivative has a positive fair value of 22 million. मतलब दिसंबर को हमने पेमेंट तो किया नहीं, सितंबर टू दिसंबर 3 months. सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में 22 मिलियन का गेन है. अभी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, गेन है. इसका मतलब जो फॉरेन करेंसी पेमेंट करना है ना सप्लायर को, उसमें 22 मिलियन का लॉस चल रहा होगा. बिकॉज इफेक्टिव हेजिंग का मतलब वहां गेन, यहां लॉस, यहां गेन बरोबर. दे आर नॉट सेइंग, दे आर जस्ट सेइंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 22 गेन. द डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा applied the relevant provision of IFRS 9. We have not studied last class. Who was saying? I remember. I don't need to say. कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब पढ़ाएगा, हम फिर बोला, और पहले भी बहुत बार बोल चुका है, अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है. बोलता कंपनी फॉलो IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू दिस ट्रांजैक्शंस in the financial statement for the year ended December 2017. This 22 million gain cannot be recorded in PL account till the time the payment to the supplier is not done. In the derivative contract, the gain is recorded as other components of equity, OCE, not recorded in PL account. That's other components of equity. But when the settlement will be done on 31st March 18,
the derivative had positive fair value of 32. अब 22 से 32 हो गया. That means in the actual payment to supplier, there will be 32 loss. On March, the bank made a cash payment 32 to Alpha. मतलब जिसके साथ derivative contract किया था, उन्होंने हम लोग को 32 million मार्च में दे दिया. The only accounting in the current year, that is in December 18, Alpha has debit cash and credit derivative asset with 22 million and credit 10 million PL account. So there is a last year 22 million assets and gain value and 10 million current year gain. We have recorded 10 million gain in PL, 22 million assets and 32 million we received. Actually, last year what we did? Last year we recorded, say, other comprehensive income account credit and asset account debit. Bolega, why asset? Let me come. And now in the current year, we have done 10 account, 10 million credit in PL and debit cash. And the 22 million asset. Last year, suppose we recorded property, plant, equipment, debit, credit, other components of equity 22. Because last year, the contract was still running. Money was not received. On March, the contract settled. The payment done. The contract khatam. So on 32, we get 32 cash account 32, credit asset derivative asset 22, and credit PL account 10 million we have done in the current year. You do not need to consider the adjustment to property, plant, and equipment for depreciation on purchased asset. You do not need to consider the adjustment to property, plant, and equipment for any depreciation. For this, if there is any asset adjustment, depreciation will not come. For this, if any adjustment, depreciation you don't need to think. नहीं सोचेंगे भाई. But इसका adjustment करना क्या है यार? इसका adjustment क्या करना है? इसका adjustment simple बात ये है भैया, आपको पूरा का पूरा 32 assets में ले जाना है. Why? You understand that when you have paid to the supplier, you have paid 32 million extra. So you may have debited the asset value by 32 million. लेकिन अभी आपको 32 million asset, you understand. Suppose I am purchasing an asset from US. ठीक है? I need to pay $1 lakh. $1 lakh today value say 84 lakh INR. Now I need to pay after 6 months. Suppose the dollar value after 6 months 86. So I will be paying to the supplier 86 lakh. Somebody will say assets value will be 86 lakh. But actually, I have done some derivative contract where there is a 2 lakh gain. So my actual cost of asset is 84 only, it is not 86. Because I have done the derivative for this purpose only. The accounting body is saying that you have paid to the supplier for the asset 32 million extra. And in the derivative, you got 32 million gain. So that 32 million will be adjusted from the asset value. It cannot be recorded in the PL account as a gain. You have recorded 10 million gain in PL account. You have recorded other components of equity 22. Eliminate that. Adjust from the assets value. PL account में क्रेडिट करने के बजाय एसेट से एडजस्ट करिए. मतलब यहां इतना ही बात है. If you are entering into derivative for any asset hedging, एसेट का पैसा देना है, कुछ होना है, for that reason you are doing derivative. The derivative gain or loss will be adjusted from the asset value. The gain or loss cannot be taken to PL account. The gain or loss cannot be taken to PL account. That will be adjusted against assets value. Last year, we have recorded derivative asset debit 22, other components of equity credit 22. Current year, we have settled the contract. So we are getting cash 32, credit derivative asset 22, and credit PL 10 million. But that is wrong. This is relating to asset. The gain or loss will be adjusted with the asset value. So other components of equity 22 of last year, the 10 million which is recorded in PL account will be adjusted from asset value. Because ultimately the asset value is, we paid to the supplier 32 million extra, but in the derivative contract we gain 32. So gaya, aaya, net में nothing. So why the asset value will increase by 32 for payment to the supplier 32 extra? The asset value will remain intact. Whenever you are doing derivative for asset purchase
and you are making the payment to the supplier, maybe more or less, but that you are settling through derivative, then the derivative gain or loss is adjusted with the asset value. Here they have recorded the gain under PL account, not allowed. That gain need to be adjusted from the assets value. We paid to the supplier 32 extra. The derivative gain will be adjusted from asset value 32. So no extra, no less. मेरा 84 लाख ही एसेट का वैल्यू रहेगा, 86 नहीं रहेगा. Maybe I am paying 2 lakh extra to supplier, but in the derivative I am getting 2 lakh. So that is set off. The net figure for me, the asset cost is 84. So they have recorded other components of equity, eliminate. They have recorded 10 million gain, eliminate. They have not adjusted from asset value, adjust from the asset value 32 million. This is derivative accounting. Derivative accounting says that when there is derivative contract for purchasing any asset for payment to the supplier, then the derivative gain or loss will be adjusted from the asset value. Derivative gain loss will not be taken to PL account. It will be adjusted from the asset value. So they have recorded in PL account, need to be adjusted from the asset value. आपको other comprehensive से ये हटाना है, PL से 10 हटाना है और asset से 32 million गायब करना है. कैसे करना है मैं दिखा दूंगा, फिर से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है. अभी आगे बढ़ते हैं. सारा एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ लिए. फर्स्ट कॉपी पेस्ट वी हैव डन already. They have done actually. Second, the percentage holding, fair valuation, deferred tax and all that. Third, the goodwill impairment, which we have not calculated, we will. Fourth, the unrealized profit adjustment, which is 5 million. And fifth, there is a derivative adjustment, which they have done wrong. We need to rectify. This is actually the adjustment of next chapter, financial instrument, which we have not done yet. And then they are saying prepare consolidated balance sheet under spreadsheet. I am solving here only. I am not solving in normal Excel. मैं इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर में ही सॉल्व कर रहा हूं. कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कहीं भी सॉल्व करें. बस ये है वन थिंग, इफ आई वांट टू डिलीट दिस रो, ऑप्शन नहीं है यहाँ. इफ आई वांट टू ऐड वन मोर रो और कॉलम, ऑप्शन नहीं है. दिस एक्सेल इज डिफरेंट देन द नॉर्मल एक्सेल. That in the normal Excel, row or column addition deletion is possible, but in the exam software addition deletion of row column is not possible. तो आपको अगर रो ऐड करना है तो क्या करना होगा, क्या किया जाएगा? सौरजब खान, if we need to add one extra row in between, क्या करें? आप चुपचाप से यहां पर ये सेलेक्ट करिए. हैं, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर दीजिए. कंट्रोल सी करने के बाद वहां जाइए जहां पर रो ऐड करना है, यहां पर ऐड करना है. ठीक है, यहां से फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए. ठीक है, अब कॉपी पेस्ट जब हुआ है तो अब आप इसको क्या करिए, ऊपर वाला 2 फिगर को हटा दीजिए. और क्या, दैट्स द ओनली थिंग. यू कांट डिलीट और ऐड रो और कॉलम इन द एग्जाम सॉफ्टवेयर. अभी तो मेरे को ये सब करना नहीं है, तो हम तो क्या करें, फिर से हम पुराना वाला ही ले आए भैया. ठीक है, मैंने पुराना वाला ही ला दिया. अभी सबसे पहले मेरे को ये जो था ये करना था, कॉपी पेस्ट हो गया. अब मेरे को थोड़ा वर्किंग स्टार्ट करना होगा. वर्किंग क्या क्या है? वर्किंग नोट 1. थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं. Working note 1, group structure. I am preparing group structure. I am preparing group structure. You can skip in the exam because उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है. Group structure. What is that? Alpha. A. I am writing A holds. Yeah, A control 90 by 120 equals to 75% and NCI 25% since 3 years. कि मैं गलती नहीं कर दूं भैया, 3 साल हो गया, 75-25 है, बस ये %, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है एग्जाम में. दिस इज जस्ट अ राइट अप सो दैट आई डोंट डू मिस्टेक. वर्किंग नोट 2,
net assets of beta B. Whether by writing B limited they will deduct marks. आप एक जगह ऊपर लिख दीजिए अल्फा मींस ए लिमिटेड, बीटा मींस बी लिमिटेड, चलेगा। वैसे एग्जामिनर कोई मार्क्स डिडक्ट करने वाला नहीं है, करना है तो खेल लो, हम लोग के साथ कोई बात नहीं है। We require this for 2 dates. What is 1st January 2016 and 31st December 2018. हम लोग को ये दोनों डेट को चाहिए। Why we require? Because 1st January will be used for goodwill and 1st to 31st December post acquisition, which will be distributed between shareholders. We can write all the assets of subsidiary minus liability, but shortcut subsidiary share capital, reserves and all that. सबसे पहले share capital. Share capital given in the balance sheet on March 18 is 120 in triple zeros. They have written that you need to write, this is already triple zero. If I will write 120, then it will come in millions. But they have suggested in the question triple zeros. ठीक है? But what is the share capital 3 years back? In the balance sheet, it is given 100 and 1,20,000 thousands. But they have not given in the balance sheet outside that what was the share capital 3 years back. No assumption, presumption, which does not require any assumption. 3 years back also it was 1,20,000. Same. Retained earnings. Retained earnings. Retained earnings. क्या था फिगर याद है? In the balance sheet, in the adjustment, it was 35,000. 3 years back in the adjustment, and in the balance sheet, क्या भाई? 85,000. 85,000. Let's check the balance sheet. ऊपर ही हम लोग का बना हुआ है यहाँ पर 85,000. 85,000 on the balance sheet date. Other components of equity on the balance sheet date 35,000. वो भी लिख देते हैं. Other components of equity. OCE. Other components of equity 35,000. What was the figures 3 years back? That was given in adjustment number 1. This they have given that 35 and 25 3 years back. 35 and 25. 35 already written and this is 25,000. This is subsidiary net assets, means shareholder money, share capital, retained earning, reserves and all that. There is no other things. Now fair valuation. Fair valuation of property, plant and equipment. What they have written 18,000. How come? Because in place of 90,000 it was 1,08,000. In place of 90,000 it is 1,08,000. So 18,000 fair valuation. When? 3 years back. Obviously it is still 18,000 more. But in 3 years there is a depreciation. Depreciation on fair valuation of property, plant and equipment. How much? It is 18 into 3 by 4. Why 3 by 4? Because they have written in the question that this property which is fair valued, the life is 4 years. From 16, 4 years. 16, 17, 18, 3 years gone. So out of 4 years, what is the depreciation for 3 years? This depreciation we will be doing from 1st January onwards, not on 1st January. So this is going to affect the profit of 3 years after that. So this is not on 1st January, but this is on 3 years. 18,000 into 3 by 4, how much? 13,500. This is depreciation, so this will reduce the income. 13,500 will reduce the income. Then fair valuation of brand. Fair valuation of brand. How much they said? I forgot the figure. Fair valuation of brand. They have said 30 million and 10 years is the life. 30 million means 30,000. 30,000 3 years back, 30,000 now.
But in 3 years, there is a amortization of brand. Amortization of brand. 3 years. So 30,000 into 3 divided by 10. 30,000 into 3 divided by 10, which is coming 9,000. For tangible assets, we use the term depreciation. For intangible assets, we use the term amortization. और क्या था? They are saying deferred tax on these two need to be considered. ठीक है, पहले deferred tax ले लेते. Deferred tax. Deferred tax. First 3 years back, it was 48,000 into. It was 48,000 into 20%. 48,000 into 20%, which is 9,600. This is negative. 9,600. And after 2 years, it is 48,000 minus 13,500 minus 9,000. The whole thing into 20%. Because after 3 years, the assets value in the books after depreciation is coming this, and then 20% on that is tax. So 48 minus 13,500 depreciation minus 9,000 impairment. Balance pay 20%. How much? How much is the value? $5100. 5100. So it is minus. Why it is minus, Rohit ji? Why not plus? सर वो लाइबिलिटी ना पे करना है हम लोगों को. क्योंकि एसेट्स जोड़ रहे हैं, लाइबिलिटी घटा रहे हैं. बोलेगा शेयर कैपिटल रिजर्व्स, वो लाइबिलिटी एसेट्स का डिफरेंस है. एसेट्स, ये लाइबिलिटी नेट एसेट्स को कम कर रहा है, इसीलिए. और क्या है? एंड दे हैव सेड इम्पेयरमेंट, वो तो बाद में निकालेंगे, पहले गुडविल आए तो सरी. बट ऑल दीज आई विल फॉरगेट लेटर. आई नीड टू डू डबल एडजस्टमेंट्स. The fair valuation will increase the assets value. The depreciation amortization will decrease the assets value. The deferred tax will be recorded in the balance sheet. The deferred tax will be recorded as adjustment from the profit. So profit से तो minus हो गया, लेकिन deferred tax को balance sheet में भी तो लेना पड़ेगा. सबको आते हैं. आइए यहाँ ऊपर adjustments. So we are saying adjustments means 48,000 plus minus 13,500 minus 9,000. All these adjustments are what? Working note 2. I am helping the examiner key from where we are getting these figures, which we have written in working note 2, relating to increase in the assets value 48 minus depreciation. This we are getting from working note 2. The one adjustment is profit done, and the second adjustment in the assets value done. Then the deferred tax. Non-current deferred tax. Under deferred tax, we will say 5,100. How come 5,100? अभी सर रोहित जी ने बोला था कि it is coming 5,100. The 5,100 is the balance sheet figure. But 3 years back, the figure was 9,600. And now the figure is 5,100. So what we will do with the difference? After 3 years, the value left is 5,100, but 3 years back, it was 9,600. So what we need to do with the difference?
What we studied in IS 12, deferred tax changes will be coming in the PL account. The closing figure will come in the balance sheet. Compare with the opening figure, difference will be coming in PL account, 9600 to 5100. Deferred tax liability has gone down. 9600 to 5100 is coming 4500. Deferred tax liability gone down by 4500. That 4500 will be adjusted in PL account because you have recorded 9600 as a deferred tax expense first year. But now after 3 years, only 5100 left. So balance expense already reversed. Reverse means in 3 years, the income tax income has already gone up. Because of that, we have already paid the taxes. So whatever the deferred tax we recorded, we need to cancel. Opening balance, closing balance, difference is adjustments. Difference is adjusted in PL account. So I will just write difference in deferred tax 9100 minus 9600 minus 5100 equals to 4500 will be adjusted in PL account for deferred tax reversal. Do we need to prepare PL account or we need to prepare balance sheet only? हम लोग को तो आप जब ये दोनों कॉलम का फिगर निकालोगे डिफरेंस अपने आप तो माइनस हो गया ना, because in the third 3 year later you are deducting only 5100, but 3 year back we deducted 9600, so balance automatically profit has gone up. कुछ करना नहीं है आपको, but we don't need to do anything as we are not preparing PL account. It is already adjusting post acquisition income. This what I am writing is not required in exam because they have specifically mentioned in the question. They have specifically mentioned in the question that student don't need to give explanation. ये मेरे को ऐसे ही जोश आ रहा है. Normally, if you get a question on final accounts, you need to adjust in PL because it will be asking PL also. Here we are not preparing PL, already adjusted. Relating to this, if anything else will be there, we will be doing, but whatever things are there, we have recorded double time. All. In the balance sheet, here in the profit, we have recorded all the things double time so that we don't forget. As far as impairment is concerned, when I will calculate, then I will be able to understand. लेकिन impairment निकालने के लिए पहले goodwill निकाले तो सही. Then तो we can calculate impairment. So working note 3, goodwill. Goodwill cost of investment. Cost of investment. How much is the cost of investment? 207.9 था ना? Other than the expenditures. 207.9. ठीक है? 207.9. 1 second. 207.9. Cost of investment. 207.9. Because 000 each 207, 2,07,900. NCI. What will be the NCI value? They have not given. They are saying whatever the assets value based on that. If normal Excel would have been there, you will be getting below the net figure. But यहाँ तो normal Excel नहीं है ना.
तो आपको क्या करना होगा, इक्वल टू दिस सबको ले लीजिए और क्या होएगा, कितना आया, हट what happened, 1 second, it has taken copy pasted, 1 second, we need to press plus, so this plus this plus वो सर सम वाला फॉर्मूला डाल दो ना, सम करके इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट में और सब टोटल, फिर वो माइनस खुद ही कर देगा। ठीक बोला आप सर, वही कर देते हैं सम। अब सबको ले लेते हैं सर, अच्छा किया आप, सही याद दिला दिए सर। ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया सर। 2,18,400 in every exam, whether you are giving exam from home, whether you are giving exam in exam center, all these will be working. All these will be working. Nobody can say that these were not working. Believe me, sir. So 2,18,000 and 2,64,000 दोनों का difference क्या है? 42,000. Can we say? Post acquisition. Post acquisition. Post acquisition reserves. Post acquisition reserves is how much? 2,18,000, 260 each, 400, 442,000. But need to understand that this 42,000 includes other components of equity 25 to 25 to 35. This includes 10,000 other components of equity. बोलेगा why you are saying this? This includes 10,000 OCE. Can we record retained earning and OCE together? We can't. Other components of equity will be other. You can't say retained earning. तो जब आप 42,000 को लिखोगे भी बैलेंस शीट में अलग अलग ही लिखना होगा। 32,000 retained earning, 10,000 OCE. You can't say retained earning 42,000. तो जब ब्रेकअप दिखाएंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो मेरे को यहां पर चाहिए था एनसीआई, मेरे को नहीं मिल रहा था, इसलिए 2,18,400 into how much? 25%. Because they have not given the figure, they are saying assets ka value is the NCI value. So 2,18,400 into 25%. What is the NCI value? 43680. 2,18,400 into 25%. 54,600 less net assets on 1st Jan 2016. वो कितना है? 2,18,400 minus 2,18,400. So goodwill on 1st Jan, goodwill on 1st Jan 2016. शॉर्टकट थोड़ा कर दे रहा हूं। दिस माइनस प्लस लिख देते हैं, प्लस 75% ऑफ this. If I will add these two, then this it is coming same, because which we discussed yesterday. कि 2,18,000 includes 25% as 54,600. 54,600 added, deducted. Ultimately, we are deducting from 2,07,900 75% of this.
So either you add minus this, it is only partial goodwill. It is not the full goodwill. It is only the partial goodwill. This is the goodwill on which date? 3 years back. And when we want the goodwill, when we are preparing the balance sheet, so less impairment on 31st December. What is happening, man? 31st December 2018. Impairment on 31st December 2018. For that, this story is given. They are saying that it is a cash generating unit which is always subsidiary, is a cash. They are not having one asset, so many assets. So their assets value are fair value and less. These values are this. So if there is an impairment, you calculate and you record. Now, the assets value we have calculated already. The assets value on 31st December, we have calculated how much? 2,60,400. Assets means all assets minus liability, or it is share capital, revaluation, everything. So 2,60,400 does not include goodwill. And 2,60,400 plus the goodwill, 44,100, will give you the total value. Carrying value in the books. And that value will be compared with the recoverable amount. If the recoverable amount is lower than the carrying value, the difference is impairment loss. That impairment loss will be adjusted from goodwill value. But there is one problem which I have not discussed, which I am discussing now. This is 75% goodwill. Okay? Because NCI is not fair value. So this is only partial goodwill. And the assets are 100%. This is 100% assets. And the value which they have given, the value in use fair, this is 100%. The impairment will be calculated 100% because this is 100% value. And this value is also, this value is also 100%. Only the goodwill value is 75% because NCI value is proportionate net assets. So for impairment, we need to do something. What we need to do? Goodwill, 100%. We need to calculate 100% goodwill. How? Unitary method. 44,100 divided by 75%. If 75% goodwill is this much, then what is the 100% goodwill? If 75% goodwill is this much, then what is 100% goodwill? This is becoming 100%. Okay? Because assets are 100%, recoverable amount is 100%. We can't compare with 75% goodwill. So we will make 100% goodwill. Net assets other than goodwill, 100%, which is 2,60,400, which is 2,60,400 on the top. Okay? But the recoverable amount is higher of the two, 3,05,600. Recoverable amount, recoverable amount, recoverable amount, higher of fair value and value in use, which is 3,05,600, which is 3,05,600 minus 3,05,600. So what is the net value? This plus this plus this, it will automatically do minus. So it is giving me 13,600. This 13,600 is 100% impairment. We have not recorded 100% goodwill. We are recording only 44,100, 75%. So we will record only 75% impairment.
100% impairment, 75% impairment. Because in the group accounting, we are not writing 100% goodwill. So impairment will be recorded only 75%. This into 75%. क्या हुआ इसको यार? ठीक है, 10,200. The total impairment is 13,600. But since in the group account we are not writing 58,800. 58,800 is US GAAP, which Himanshu Yadav asked in the last class. In the US GAAP, we do the fair valuation of NCI by doing 75%. But IFRS is saying that net assets is 100%, recoverable is 100%. Make this 100%. Find out impairment 100%, but record only 75%. Because we are recording in IFRS partial goodwill, so impairment will only be partial. And this will not be adjusted with NCI. Because we are recording only goodwill for parent. So we will record impairment only for parent company. We can't record the full impairment. In the yesterday class, I have not said this because at that time, my focus was not on this to tell you need to make 100%. It was difficult to explain at that time. So I was just focusing. There are two ways by which goodwill calculation. Either the NCI fair value given full goodwill or the NCI net assets basis to partial goodwill. So when partial goodwill calculated impairment loss only parent company, but full goodwill calculated impairment loss both. Here partial goodwill, so impairment loss only parent company. This impairment loss calculation will definitely be giving you 3-4 marks. जो भी जितना भी marks वो लोग देंगे. So पहले हमने goodwill निकाला and then we have calculated impairment loss. This impairment loss we are going to adjust from retained earnings of parent company. And we will record goodwill how much in the balance sheet. Goodwill on 31st December 2018. Goodwill on 31st December 18, which is out of 44,100, 10,200 gone, equals to 44,100 minus 10,200, which is coming 33,900. You can make this bold. You can make this bold, but इतना सुंदरता का कोई काम नहीं है. 33,900 is the goodwill which we will be writing in the balance sheet. And from the profit, we will be deducting 10,200. The goodwill calculation. As far as working note to everything done. Working note 3 impairment and retained earning. Impairment I will be deducting from retained earning, that I will do. Working note later. And as far as goodwill figure, I will write in the balance sheet. Let's write. How much goodwill we are saying? 33,900. So goodwill 33,900 in the balance sheet. Financial asset. This financial asset, we are saying minus 2,10,000. Why? Why we are saying minus? Because this is already fully adjusted in goodwill. There is a portion of 2.1 million 2,100 which is adjusted from profit. That is other thing. But entire 2,10,000 gone. And what we are writing? We are writing goodwill working note 3. That we are writing goodwill as 33,900. Where is the final figure? Final figure here. 33,900. 33,900. And the investment value nil. Because subsidiary don't have parent fully in the subsidiary, that is gone. But we will forget 2,100. So working note 5 retained earning is required. Maybe we will do later. First of all, we will be doing working note 4 NCI. Okay? Then we will be doing working note 5 consolidated reserves. There are two types of reserves. One is retained earnings and the other one is what? Other one is OCE. Okay? One is retained earning, other one OCE.
a limited balance, parent company balance. Parent company balance we can see from the balance sheet. Parent company balance each 295 and 80,000, 295 and 80,000, 295 and 80,000, 2,95,000 and 80,000, 2,95,000 and 80,000. This is a limited figure. In that we need to adjust what? Legal expenditures for investment. They have recorded assets, but for the group accounting, legal expenditure is expenditure. Minus 2,100. Minus 2,100 because we will forget investment we have cancelled. And impairment in goodwill. Impairment in goodwill we have calculated above how much? 75% impairment, 10,200. 10,200. Impairment in goodwill, 10,200 minus 10,200. Why I am writing? Because I will forget. For that reason, before writing anything, I am first of all doing the double adjustments. The investment figure gone and the impairment recorded. Okay? Deferred tax recorded, all done. So this, the double adjustment for impairment calculation done. This, all the things are done, double adjustment, assets revaluation, deferred tax, then goodwill calculation, impairment and everything. And the NCI valuation, everything done. So we are left with the last one. In the last one, they have said that last year they have recorded 22,000 as a other comprehensive income and recorded as assets. And in the current year, when it is settled, they got 32,000 asset cancelled and 10,000 recorded in PL. But that cannot be recorded as an income because it is for hedging purpose. It is not a gain. So we have recorded this in the PL account, parent company income. We need to deduct profit on hedging transactions. Profit on hedging transactions. Profit on hedging transactions, which is minus 10,000 and minus 22,000. Why we are doing this minus 22? Because 22,000 is here, 10,000 is here. One portion is in retained earning, one portion is in other components. And where it is to be adjusted? It is to be adjusted from the assets value. The gain will be adjusted from assets value. If it is loss, it will be added to the asset value. Because here loss means you need to pay to the supplier less. So the supplier payment is less, asset value less, you need to add in the assets value. It is a gain, so you need to adjust with the need to be adjusted with asset value. Need to be adjusted with assets value. So in the assets value, 32,000 minus. In the assets value, 32,000 minus. We can say here, minus 32,000. Which is working note. Minus 32,000, which is working note what? Which working note we are doing? 5. 5. कहाँ गया? Should I take this like this? I should write here.
minus 32,000 working note 5. Why it is not taking यार, इधर लिख देता है minus 32,000 working note 5. Still it is not taking. क्या प्रॉब्लम है इसको? Why it is coming in blue? minus 32,000 working note 5. I think because ये WN को वैसे क्यों ले रहे हैं? सर वो माइनस लिखने से वो फॉर्मूला लगा दे रहा है। माइनस लिखने से फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं 32,000 वर्किंग नोट 5. अब तो नहीं लगाएगा ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर को चाहिए आप कहां से क्या फिगर लाए हैं, थोड़ा सा तो वर्किंग नोट वर्ड वगैरह यूज करने से अच्छा रहता है. सो 32,000 एडजस्टमेंट डन फ्रॉम द प्रॉफिट, 10,000 डिडक्टेड फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स एंड इट इज एडजस्टेड इन द एसेट्स वैल्यू. एनसीआई का फिगर रह गया है. एनसीआई एट 1st Jan 2016. 1st Jan 2016 we have calculated figure of net assets का 25%. NCI net assets का 25%, 54,600. NCI 54,600. 54,600 and share in post acquisition reserve. मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, रिटेन्ड अर्निंग और सब मिलाकर 42,000 इंटू 25%. बोलिए कहां से आया? When we have calculated the net assets in working note 2, then for the net assets we have said 42,000. 42,000 में NCI का शेयर is 25%. 42,000 into 25%. How much? 10,500. 42,000 into 25% is 10,500. और तो कुछ NCI में है नहीं. They are beginning figure and in 3 years this is the gain. So it is coming 65,100. 65,100. 65,100 is the NCI figure. The 3-year back plus the profit in 3 years, the portion of NCI total 65,100. We will write on the top. यहाँ भी share लिख देते हैं. Share in post acquisition reserve. Share in post acquisition reserve. Please see here. It is 42, but out of 42, 32,000 is profit into 75%. And this one, 10,000 into 75%. It is 42,000 only, but 10,000 retained, 32 retained earning and 10,000 other components of equity. Whatever the figures are there, they will be taken in that respective reserves. So we say this, then sum, then in bracket this, plus this, plus this, plus this, plus this. ठीक है, bracket closed. So it is giving me 2,96,700 and this one, इसको मुंह से ही कर लेते. 80 minus 22, 58, 58 plus 7, 65,500, 65,500, 65,500, 58 plus 7, 65,500. So NCI and these two, 2,96,700, 65,500. And what was the NCI? That is 65,100. ठीक है, चलिए यहां चलते हैं.
Share capital, it is minus 1,20,000 subsidy gone. Yes, सर हिमांशु, इंटरकंपनी वाला एडजस्टमेंट कर दिया क्या हम लोगों ने? है ही नहीं सर, वो लोग बोला कुछ देना लेना है ही नहीं. They said in the question, oh, ये वाला unrealized profit, sorry सर. यस इंटर कंपनी लेना देना नहीं है, ट्रांजेक्शन हुआ उसका अनरियलाइज प्रॉफिट. सो 20,000 का 5,000, दिस इज सोल्ड बाय अल्फा. यस सर, ये नहीं किए थे सर, बेकम का मार्क्स कट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. डिलीट ही मार देते इसको यार. लेस पीयूपी, less PUP is 20,000 into 33.33 by 133.33. So this is coming 5,000. This is coming 5,000. So equals to sum. Sorry, bhai. This one plus 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 this one. So 2,91,000 and this is 65,500. This is bold. This is deleted. 2,91,700 and 65,500. And remember, 5,000 need to be deducted from inventory. If I would have not done the adjustment for this, then also balance sheet will tally because both the adjustments are not done. But marks to katega na. Equity, share capital. Share capital only of the parent. Subsidy gone. So it is 2 lakh only. For this, we will say that these figures minus 2,95,000 gone, minus 85,000 gone. इसके बदले आया क्या? इसके बदले हमने नया फिगर क्या लेकर आया? 2,91,000 कितना है? The retained earning 700. I am forgetting 1 second. 2,91,700. 291,700 and 65,500. 291,700 and 65,500. 65,500. You can say this is working note 5 and this is also working note 5. And then comes NCI. NCI is a part of equity. Working note 4. What was the figure of NCI? NCI 65,100. NCI 65,100. 65,100 is working note 4. Working note 4. Now let's see, is there any inventory we have? We will adjust. Otherwise, I will forget. For property, plant and equipment done, financial asset done, goodwill done, inventory. Inventory minus 5,000. Okay. So it is 125 plus 90, 215 minus 5, 2,10,000. Then 1 lakh plus 80, 1,80,000. No adjustment. Then 40 plus 30, 70,000. No adjustment. Okay. So equal to
sum. Right. I should put the sum here only where they have written equal to sum in bracket. This plus this plus this. Then comes plus this. अब ये लास्ट वाला तो हमने अभी तक लिखा नहीं है भाई, इसको लिख देते हैं पहले. 5 lakh plus 2 lakh 60, 7 lakh 60. First of all, we need to calculate this figure here. Okay. First of all, we need to calculate this figure. फॉर्मूला सर Equal हटा to. देने एडिट होता था फॉर्मूला. हाँ, फॉर्मूला एडिट होता था, वो आपने हटा देना, एक्सेल ऐड हो जाता था उसमें सेल नंबर. फॉर्मूला हटा दिया आपने. आप ये वाला क्या, तो वो ले रहा नहीं है ना यार. नहीं मतलब उसको जोड़ देते ना, वो बाद में ले लेता सेल को. छोड़ना यार. 5 lakh 2 lakh 60 minus not minus plus 48,000 minus 22,500 minus 32,000 हो गया सब एक साथ. 753,500. अब हम लोग कर सकते हैं 753,500. ये फिगर्स को रहने दे यार, इन सबको यहीं ले आते हैं. दिस इज द लाइबिलिटी वन ना, इनको यहीं ले लिया. सो दिस इज इक्वल टू सम दिस plus this plus this plus this and plus 12,47,400. ठीक है. This is the asset side. Liability side, we have written share capital, retained earning, reserves. Then this एक बार इतना को जोड़ लेते हैं, ये लोग भी जोड़ के दिया है. So this one, sum this plus this plus this plus this. This is becoming equity. फिर उसके बाद this figure don't have anything. 150 plus 62 lakh 10,000. This figure deferred tax 5,100 gone up, so 1,40,000 plus 5,100, 1,45,100. दोनों मिलाकर 3,55,100, 3,55,100. ठीक है. This is one figure and this is one figure equity, and there is no adjustment in this 80 or 90, 170. This is 60 and 40, 1 lakh. This 1,70,000 लिखने का भी half marks होता है, half marks, no adjustment also. क्या problem है? 2,70,000. So 2,70,000 becomes current liability total. So this current liability they have added with non-current. 2,70,000 plus 355, 325, 6,25,100. 6,25,100. 625,100 is all outside liability. 2,70,000 plus 355.
6,25,100 and 622,300. 622,300 and 625,100 कितना आएगा? 12,47,400. यही हो रहा है ना? 12,47,400 is the balance sheet liability side total. Non-current, current liability and equity. 6,22,300, 625,100. So 12,47,400 और ऊपर कितना है? Assets also 12,47,400. Story finish. टैली नहीं होता, कुछ गड़बड़ की होंगे, देखना पड़ता, बट हो गया बाई चांस. What I want to say that the first thing, your job, if the copy paste question is not given, you do copy paste in the Excel without doing any adjustment. Now, definitely in group accounting, this big adjustment, purchase of investment, this date and all that, all will be given. These are focusing on working note 2 figure. These are focusing on cost of investment figure. These are focusing on some fair valuation. And if they will give some adjustment on deferred tax, then deferred tax also. It's very common thing. In all the exams, they are giving, किसी में deferred tax देता है, किसी में नहीं देता. आपको शांति से cost of investment particularly calculate करना है. If it is directly not given, some expenditures are given, take in PL account, not take it a part of investment. Then working note to take the assets, share capital, retained earnings properly at 2 different dates. See the fair valuation recorded in both the column of working note 2. Consider the depreciation on the fair valuation for the balance period. If there is deferred tax on both the column will be different. Because earlier there is no depreciation. After that, after 3 years, there are depreciation also. So the value of assets has gone down, deferred tax liability gone down. The difference is adjusted in the profit automatically. You don't need to do. Just that closing figure will be coming in the balance sheet. Then if there is impairment in many questions, direct impairment given, not like this. But in some question, impairment not given. And you need to calculate impairment, they will be correlating IS 36, which is related with impairment of cash generating unit. Then maybe they will give NCI full money, fair value, then it's okay. If not given, then you are calculating goodwill only partially. You need to make full goodwill, then compare with the fair money, recoverable amount, loss, but that loss you can't account for. You need to account only that much loss which we are recording in the books. In this question, that loss we are saying as 75%. मतलब थोड़ा झमेला है when the impairment loss need to be calculated. In IFRS exam, they generally give. For FR exam, they give this type of question in multiple choice only. झमेला ही खत्म. But they can give in essay type also. Intercompany adjustment focus on percentage, where to apply, what is the amount, from which profit to be deducted properly, from adjustment in the retained earning, inventory, and adjustment in the profit. This is, you can see, separate, which we have not done, but still since the question need to be solved fully, for that reason I discussed what I said. When we are doing derivative for asset purchase purpose, then in the derivative, whatever loss gain will be suffering or will be earning will be adjusted from the assets value. Here we have gain in the derivative transaction. That is not a gain. The gain will be adjusted from the assets value. If the derivative are for hedging purpose, for adjusting the assets purchases, then the gain or loss on derivative will be adjusted from assets value. They have taken to PL account, they have taken to OCE, taken from there and adjusted from the assets value. They have asked that don't consider a depreciation on this. We have not. Otherwise, from March to December, 9 months, they have not deducted 32,000 from the assets value. That means on 32, they have charged depreciation. So we need to cancel the depreciation on 32,000. But that is not required. They have said ignore the depreciation part on this. Whenever we are doing any adjustment, any plus, minus, anywhere, it has to be double effect. Not every figure. Suppose share capital, any adjustment which you are doing extra figure, they had to be there at 2 places. If you are not doing at 2 places, you will find some problem in telling the balance sheet. Obviously, balance sheet tally is not the criteria. Balance sheet मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं. मिले बहुत बढ़िया, नहीं मिले और बढ़िया. कोई बात नहीं है. क्वेश्चन ये अगर आपको मिलाना है तो आपको डबल एडजस्टमेंट पे ध्यान देना होगा.
Don't ignore the double adjustment to tally the balance sheet. That's an important thing. Even though marks are not available on balance sheet tallying. I'm just opening the answers to see whether we have done any mistake, and the marking guidelines also. Just minimizing all the chats and everything, minimizing this portion also, so that we get a clarity. First of all, balance sheet total 1247,400. Then the goodwill figure is 33,900 intangible. They have written separately. I should have also. Presentation I have included in property, plant, equipment, but property, plant, equipment is all tangible assets. Intangible, the brand value 30 minus 9,000 should have been written separately. So more pura 25 तो नहीं मिलेगा. Maybe they will deduct half marks. यहाँ half कट गया. Inventory ठीक है. Trade receivable ठीक है. Cash and cash equivalent, nothing is there. Share capital, okay. Retained earning, answer, and other components and NCI figures are okay. Non, ठीक है, okay. Deferred tax is 145, 100, okay. Trade receivable, current tax does not have anything. So total 1247. This is 218, 260, 42,000, 10,000, other ठीक है. Then this is investment, goodwill figure ठीक है. Then this is net assets plus NCI minus impairment ठीक है. Then it is non-controlling interest is okay. Then it is retained earning. They have not made two column. I have said done two column fast. They have done other components separately. No, I have made two columns. So 24 is the post-acquisition share, unrealized profit of inventory, acquisition of beta expenditures, then impairment of goodwill, then the 10,000 derivative income. And then this is 65,500. Then alpha, beta, property, plant minus this I don't require because I have shown in the adjustments. And then the deferred tax, this is not required. I have shown in the adjustments. That is gone. If we go in the marking guidelines, please see here the marking guidelines. If I am the examiner, I will be following this marking guidelines to allocate marks. Property, plant and equipment, you are writing correct figure in the balance sheet, 2 marks. Intangible assets, 0.5 marks. So my 0.5 will be gone. Why? Because I have not recorded intangible assets separately. I have included with property, plant and equipment. I will be getting 2. My balance sheet is okay, but 0.5 marks I will not be getting. Goodwill, 8 marks. Goodwill calculation correct, including non-current assets. If you want to go in the breakup, then for goodwill, you need to go into net assets, correct working. The investment cost, NCI value, all are including 8 marks. Current assets, if it is inventory, receivable, cash, all are correct, total 2 marks, in which only inventory adjustment unrealized 5,000. Receivable cash, it just need to be added. So 2 marks, 3 marks here. Share capital and other components of equity. Share capital and other components, which is 65,500. Maybe slightly, I can say that for a derivative, slightly difficult. But still, if share capital correct and some adjustment correct, out of 2.5, we will get 1.5. Retained earnings fully is not possible. Non-controlling. Here, they have not given the breakup of 8 marks. They will give the breakup. Fair valuation written separately, depreciation written separately, 1 mark like that. यहां पर दिया नहीं है, नहीं तो एग्जामिनर को पूरा ब्रेकअप देता है 8 मार्क्स और 6.5 का. There also some free marks are there. Long-term borrowings just needs to be added. Deferred tax just maybe suppose slightly. Current liability 1 mark, 0.5 mark. Here 2.5, 1.5 approximately. Here 2, 2 number. और यहां समझ लीजिए 1.5, 3.5. Then you can say long-term borrowing 0.5. Then 1. Around 6, and some of the marks out of goodwill and calculating correct value of investment, calculating correct value of NCI will also give you 1 mark like that. Matlab 8 to 10 marks are there on basic presentation. Basic. To score good marks, you need to do adjustments correct. If you do the adjustments correct, the 10 will become 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 like that.
So those who want to score rank, they need to increase the accuracy level. And those who want to just pass, they just at least need to solve the question. If they will be solving the question, they will be able to pass the exam. If they don't leave the paper, that competency you need to develop, that you have the capability to maybe solve the question wrong. Maybe wrong करने का औकात बनाना है. अगर आप wrong कर सकते हैं तो एग्जाम में पास हो जाएंगे. लेकिन अगर आप wrong भी नहीं कर सकते तो नंबर कहां से मिलेगा भाई? Like I said, Adit has already gone. क्लास में सुबह लेट से आते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर बाद में तो बहुत सारा है. अर्लियर देयर वाज 25, देन इट बिकेम 22, नाउ इट इज 16. अभी उसके लिए क्या करें? व्हाट शुड आई डू? I should explain like this only. There is nothing I can do. If you want to pass the exam, you need to solve this question and you need to bring the capability that this question you can solve in around 35 minutes, 40 minutes. Because out of 45 minutes, 4 questions are there, 25 marks each. 45, 45, 45 minutes. So 45 minutes, some time will be gone in reading the adjustments, na? 5 to 7 minutes. So around 35 minutes, you have to write the answer. If copy pen, you need to write the entire balance sheet. But since it is not copy pen, it is good that you don't need to write the entire balance sheet. थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं. क्यों कर रहा हूं ऐसे? So that I can take a copy paste of this. Why I want to take a copy paste of this? So that later on, when you want to refer my answer, you will be able to refer this for that reason. ठीक है ना? This is one page. This is IFRS June 2024 exam. IFRS June 2024 exam. ठीक है? The first screenshot. Then the second screenshot. Second screenshot. Then the third screenshot. Third screenshot. Then the fourth screenshot. The fourth screenshot. Then the fifth screenshot. Fifth screenshot. Then the sixth screenshot. Then the seventh screenshot. Then the eighth screenshot. If I would be solving this in the normal Excel, I would be able to share the normal Excel. But here, if I will copy paste this in Excel, it will be very much disturbed. Adjustment need to be done. So इतना जोश नहीं है सर, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लिए.
And in all the exams, whether you are sitting in home or you are giving exam in exam center, all Excel calculation will work. This is bogus. That in my case, it was not working. It cannot happen. The keyboard may be creating problem. That complaints I have received, students have said, but otherwise not. Which is also not a problem. But since it is new, you are feeling that it is not working properly. Then why we are not giving exam sitting in home? Why we are going in the exam center? So सब चीज तो नहीं चलेगा ना यार. और एग्जाम घर पे बैठकर देना ही ज्यादा मजा है. कोई बात ही नहीं एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देने का. नो क्वेश्चन. I think it's done. Yes. I've taken the screenshot. When I will share the slides, then you will get the entire question solution. In our case, it is same only. The model answer is also same, just that I have done one mistake. That intangible asset, in place of writing separately, I have included there only, which should be separate because that is logical. Exam on website or software, I am not getting, Rohit ji. Exam on website and software means? From the software, you cannot download the Excel. You can take a screenshot or you can convert it into PDF. मैंने screenshot लिया है, but download नहीं हो सकता वहां से, सर. But the answers are same, which is there in the model answer. Same adjustment is there. Something here and there, comma, full stop cannot be same. I don't understand the working for deferred tax. The deferred tax is the tax adjustment because of accounting income and taxable income are different. Or because of your assets value in the books and assets value in the Income Tax Act is different. So you are recording in the books the fair valuation figure, the revaluation figure. So in the books, you are increasing the asset value. But in the Income Tax Act, no adjustment for fair valuation. So the assets value in the Income Tax Act is not increasing. The difference arises. So in the books, you will do depreciation on higher figure. In the Income Tax Act, you will do depreciation on lower figure. So the difference is arising at the time of revaluation. And the difference will be arising later on in depreciation. Suppose in the book value, you have done 1 lakh to 1 lakh 50. So you will charge depreciation on 150. But in the Income Tax Act, you will charge depreciation on 1 lakh only. So ultimately, both the figures will set off at both the places. So it is a temporary difference. For that, we need to create tax based on the accounting figure. So the accounting figure, when you are recording 50,000 gain, the accounting income increases, the assets value increases, but the income tax value is less. So on that gain, you need to record tax. The tax as an expense and the tax as a liability. Because you will say, why liability? Because in the Income Tax Act, the value has not gone up. So there will be lower depreciation. So later on, the taxable income will be more and you need to pay more and more taxes. So presently, when your accounting income is more, you need to record deferred tax as an expense and liability. So when we have recorded the revaluation of property, revaluation of intangible assets, they are increasing our assets value. They are increasing our income. On that, the tax is an expense, and on that tax is a liability because it is not paid. It will be paid later. So that tax we need to record in the books, which is called the deferred tax. They have said on 1st January, the figures was 48, 18 plus 30. And then later on, it is 48 minus the depreciation, minus the 3-year depreciation. So on 1st, it was 48. Later on, it is say 30, whatever is the figure. So on 48, the tax amount at the rate of 20%. On 30,000, it is at the rate of 20%.
So first, when the deferred tax liability arises, it is an expense. But later on, that liability is continuously going down. Why? Because every year the taxable income is increasing and that is getting set off. So we are saying that if earlier the figure was 9,600 and now after 3 years, the balance left only 5,100. So balance 4,500 figure already adjusted. Adjusted means what? In the first year, 9,600 was an expense. But in the 3 years, 4,600 is an income. And in coming balance years, 5,100 will also become income. 9,600 will fully set off. But presently, so it is there. Presently, we are saying that in the books, we need to pay tax. So we are recording in the books as a liability, whatever we need to pay to the government. So earlier it was 96, now it is 5,100, 5,100 we are recording. And the balance difference is adjusted in income. So the income of post-acquisition profit already adjusted. So what we studied in the taxation chapter, whenever there is a different adjustment in accounting and taxation income, whenever there is a different adjustments, on the difference we need to calculate deferred tax. The deferred tax opening figure, the deferred tax closing figure. The difference in the figure will be part of PL account and the closing figure will be coming in the balance sheet. We have done 5,100 in the balance sheet, 9,600 to 5,100 in the PL account. But there is nothing I have done for that because that is a part of PL only. From one column to another column, whatever 4,600 is adjusted, that is a profit only. If I will be preparing PL account, which I will be doing in subsequent classes, then I will be recording in PL account 4,500 deferred tax expense or income. I will be recording. But in this question, I don't need to prepare PL, only balance sheet. Whenever I am writing in the retained earning plus minus, automatically the profit is getting adjusted. Whenever there is different adjustment for any item in books of accounts, in income tax act, for the difference, there will be deferred tax. And that deferred tax we need to record in PL account as an expense or income. And we need to record that figure which is not yet settled in the balance sheet as an asset or liability. So we have recorded asset and liability, opening 3-year figure and last 3-year figure. The difference we don't need to show, automatically adjusted. And the closing figure we have recorded in the balance sheet. They have said that other than this, there are many adjustments which are creating difference. Like NCI, it is there in the books, not in income tax act. There is adjustment in retained earnings, but they have said you don't need to record deferred tax for any item other than what they are saying in the question. They said deferred tax to be incorporated for fair valuation adjustment only. They have not said that you will do deferred tax for goodwill, for impairment and all that. So I'm not doing. Otherwise, deferred tax need to be incorporated for other items also. But the question said that it should be done only on the fair value item. Whenever the books of accounts and the taxable income are different because of different adjustments, then on the difference, deferred tax will be rising. Sir, thank you for the explanation. I understand the concept of deferred tax and very clear on that. But when we were starting deferred tax, we made 2 tables, one for accounting income and one for tax base. And then we did like we followed this entire process where we were doing the 2 tables and finding the difference between the accounting income and tax base, and then charging interest on that, the income tax on that. And here you just did it like, I was a bit confused, like how did you do without the table? But here, for income tax, whatever figure we are recording in books, there is nothing in income tax act. You are recording revaluation, in income tax 0. So whatever your book figure is the difference. If there are 2 figures, then you need to do that working. But there are no second figure. For revaluation, you don't do anything in income tax act. So when we are saying that in the books of accounts, we are recording this 18 and 30, 48. In the income tax act, it is 0. Because there is no fair valuation. So the difference is 48,000 minus 0. And if you want to write that 0, you can write in the bracket that for 18,000, the tax base is 0. For 30,000, the tax base is 0. You can write. You will make 2 columns when the 2 figures are there. You have only accounting figure. The taxable figure is 0. So the difference is 48 minus 0, 48,000. For that reason, 20% deferred tax. In the second case,
It is 48, and then the depreciation, the balance figure in the income tax act is 0. You have recorded this in the books, you are recording depreciation. Automatically, this will be settled in 4 years, 18,000. This will be settled in 10 years. So you have in the books, these 4 figures are there. In the income tax act, against these 4 figures, 0. So what you will write in the taxable column, if you make also, then also. There is nothing, sir. Okay, sir. Thank you. But in money consolidation, you cannot have this type of adjustment that you will make 2 columns, because then how long we will do? In practical life, it will be there. But in the exam question, if they give so much adjustments, then we can't solve in 45 minutes now. They have to be limited. Already it is solving in 35 minutes is a big challenge. Writing, doing all the adjustment, plus, minus, understanding the adjustment, then doing. It's a challenge, sir, to solve it in 35, 37 minutes. When you solve, even though you do it, then you will find it, I'm not getting that much time to solve it in 35 minutes. So that type of thing may come when they want to give a question, not in group account, separate question of 25 marks in IFRS on deferred tax. And in that 10, 15 marks question, they are giving you tax-based figure. They are giving you accounting figure, and then you make 2 columns, and then you make difference. Maybe some question you have done, they have given so many figures. But this is a group accounting question where so many figures, if they give, it will become very bulky. They just want to test your knowledge that you know deferred tax or not. That way. So I have not made any 2 column because there is no tax-based figure here, 0. Revaluation is only book figure. Revaluation in tax base is 0. Just, sir, find different and calculation 20% on different. I'm not getting रोहित जी, क्या बोल रहे हो आप? पहला वाला केस में ये वाला एसेट्स का फिगर ये है, यहां वाला ये चारों है ना सर, तो डेफर्ड टैक्स तो धीरे धीरे जाके गायब तो होएगा ही ना. डेफर्ड टैक्स का मतलब ही है वो अराइज होगा फिर गायब होगा. तो पहले अराइज हुआ 9600 और यहां जाके अभी 5100 ही बचा है, बैलेंस गायब हो गया. धीरे धीरे और आगे जाएंगे, ये वाला पूरा गायब, ये वाला और 7 ईयर्स में गायब. तो आप जो इतना फिगर अभी एडजस्ट कर चुके 3 साल में, बैलेंस 5100 भी एडजस्ट हो जाएगा. तभी तो टेम्पोररी बोलते हैं ना. टेम्पोररी मतलब डेफर्ड टैक्स विल अराइज एंड ग्रेजुअली इट विल कैंसिल. For that reason, the differences are called deferred tax will be incorporated on temporary differences. Because अगर ये gradually खत्म ही नहीं होगा फिर तो deferred tax ही नहीं लिख सकते. You can record deferred tax only on those items which are related with those which are temporary differences. जो permanent differences है उसके ऊपर deferred tax कभी रिकॉर्ड ही नहीं होएगा सर. इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अलग से कि पहले 48 था, फिर 13,500 और 9,000 is gone. So after 3 years the figure is this. In the tax base value 0, in the books value is this, the balance is difference. And earlier 3 years back, this is the thing. So from 9600 it has already 4500 gone. And in coming further years 5100 will also be gone. So in 3 years already 4500 reversed. उसको समझाने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया जिसका कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में कि 4500 पीएल अकाउंट. हमको ले जाना कहाँ है? पीएल अकाउंट ही तो बन रहा है, हम कहाँ बना रहे हैं पीएल? हम 3 ईयर का फिगर से 5100 ही ले रहे हैं. अपने आप 4500 इनकम बढ़ गया. If I'm not deducting 9600 after 3 years, already my income is increasing by 4500. क्या सर? आवाज नहीं सुन रहे यार, कुछ बोल रहे हो क्या?
अभी भी नहीं आ रहा है आवाज, कुछ गड़बड़ है। किसी को कुछ बोलना है फॉर द टाइम बिंग? यूनिट कैलकुलेशन, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट में यूनिट कैलकुलेशन मत बोलो, तुम ऐसा सोचो प्रॉफिट लगाना है ऑन सेल, सेल वैल्यू दिया हुआ है लगा दो। प्रॉफिट लगाना है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट दिया हुआ है लगा दो। बट अगर प्रॉफिट लगाना है ऑन सेल, कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट लगाना है ऑन कॉस्ट, सेल दिया हुआ है, तो आप एक बार 100 मान कर चलिए। तो क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया हुआ है एंड प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, तो आप 20 मिलियन पे 1/3 कैसे लगाओगे? बिकॉज 20 तो सेल है, प्रॉफिट बोल रहे हैं 1/3 ऑफ कॉस्ट है। तो आप एक बार मन से कॉस्ट को 100 मान लो। 100 के ऊपर 1/3 33.33, तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33, सेल वैल्यू 133.33। 133.33 होने से सेल वैल्यू, प्रॉफिट इज 33 1/3, तो 20 मिलियन होने से कितना? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बोलने का मतलब व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट गिविंग यू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 100. If the question is saying profit is on cost, they are giving you sale value, you assume cost as 100 and then आप आगे बढ़िए, 100 में प्रॉफिट जोड़िए, सेल आएगा। अब यूनिटरी मेथड लगाइए कि 133 के बदले प्रॉफिट इतना, तो 20 मिलियन के बदले प्रॉफिट कितना। लेकिन ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में अगर बार बार मैंने सोचना पड़ रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो फिर बात समझ में ही नहीं आ रही है। बात ये, तो बात इतनी ही है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे, जिस पे लगाना है, इफ इट इज नोन अप्लाई। नहीं मालूम है 100 मानिए और आगे बढ़िए, ऐसा समझा सकते हैं हम। 100 मान के चलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो आप पहले बोल रहे थे 1/3 निकाल लेते, अरे 20 पे 1/3 निकालेंगे ही कैसे, वो तो सेल है। तो फिर आपको खुद ही लगा ओहो, फिर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो यार। तो आगे बढ़ते हैं अब डाउट्स में, जिनका जिनका जो जो मेल आया है डाउट्स में, उसमें जा रहे हैं। स्कैन डॉक सीमा कोर्स डाउट, सुदीप जी। ज्यादातर क्वेश्चन इनका भी है, सोमेन दास का भी है, पहले सुदीप जी का आते हैं। बिकॉज सोमेन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, इनका एग्जाम रिलेटेड है, पहले इनको खत्म करते हैं। फंक्शनल करेंसी इज करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स, देन व्हाट इज द क्वेश्चन? सुदीप, आर यू देयर इन द क्लास? सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने प्रैक्टिस किया, वो मैंने भेजा था आपको। तो कुछ पूछना नहीं है इसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट ये फाइल करके भेजा था कि कुछ गलती लिखा हुआ था तो नहीं, ये आप आप ठीक कर ऑप्शन डी ठीक लिखे हैं। फिर एंटिटी परचेज द लैंड फॉर 30 मिलियन दिनार ऑन दैट डे, एक्सचेंज रेट इज दिस, लैंड इज नॉन मॉनेटरी आइटम, शुड बी रिकॉर्डेड एट स्पॉट व्हेन दे आर परचेज एंड शुड नॉट बी रीट्रांसलेटेड, सो लैंड शुड बी रिकॉर्डेड एट दिस। बट इफ वी आर डूइंग रीवैल्यूएशन, then at the date of revaluation we need to adjust the rate. तो ये रिवैल्यूएशन नहीं है, आपका कहना सही है, बट अगर हम लोग लैंड को रीवैल्यूड फिगर पे लिखते हैं, तो जिस दिन रीवैल्यू करेंगे उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना होगा सर। It is a non-monetary asset, no adjustment for foreign exchange rate changes. But if it is a non-monetary asset and you are doing revaluation, then the date of revaluation figure need to be taken. Non-monetary item measured at historical cost in foreign currency are not retranslated at this. An intangible asset is a non-monetary, yes. Loan is a monetary item initially recorded at this. It should be retranslated at this. Loss at the time of settlement is this. Loss at the time of retranslation is this. The total exchange loss, if it is happening in the same year.
If it is happening in different year, then the loss is for a different years. But it's a monetary item. Monetary means exact how much you need to pay in one currency or how much you will receive in one currency, that is fixed. Then they are called monetary assets and liabilities. Then you need to record at the end of the year at the closing rate. A machine is a non-monetary item, shall be recorded at historical cost using a spot rate on the date of purchase, shall not be retranslated at the reporting date, cost of purchase, less depreciation carrying amount. ऑप्शन सी. ठीक है, पहले आप कन्वर्ट कर लिए, हो गया. Foreign currency loan is monetary item, shall be retranslated using closing rate. So carrying amount is this, exchange loss is this. ठीक है. ऑप्शन ए एंड बी कैरिंग अमाउंट ऑफ, माने मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा, लेकिन जो आपका फीलिंग है वो मेरे को समझ में आ रहा है. कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन ऑन दिस इज दिस एंड द गेन ऑन फ्लक्चुएशन गेन बिकॉज इट इज मॉनेटरी आइटम. Trade payables on opening, closing, exchange loss and gain. Trade receivable on opening, closing, exchange loss and gain. Inventory is non-monetary, initially recorded at historical cost at the time, but should not be retranslated. Foreign exchange gains should be transferred to statement of PL, not to include in revenue. क्यों लिखे आप? Why you are क्वेश्चन writing? का डिमांड था सर, क्वेश्चन का डिमांड था कि रेवेन्यू में वो आ रहा है, ये अच्छा हाँ स्टेटमेंट ठीक है. फॉल्स Foreign है कि exchange ट्रू है? gain loss comes in PL. Yes sir. It is not a part of revenue or other cost. Current year estimated tax expense, opening DTL, closing DTL, closing temporary difference, reversal of DTL. ठीक है. A debit balance in trial balance under provision means we have under provision. It should increase tax expense. Yes. Practice and revision kit. Exchange rate fluctuations. Practice and revision kit मतलब आप लोग आइए फर्स्ट वाला. हाँ सर. ठीक है सर, लेकिन ये कैसे समझूंगा मैं? वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो समझ में आ रहा था. ये तो अभी वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. आपको कोई डाउट नहीं है? आप ये बोल रहे हैं आप ऐसे नहीं ही नहीं नहीं, मैंने लिख के दिया था एक, मैं एक एक अच्छा. कंप्लीट कर रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ. ये वाला आज हो गया, ये जो नहीं तो लिख के देना मतलब या तो आपको मान लीजिए ऐसा कुछ देखना है कि कोई डाउट है, या ऐसा है कि कोई आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो और उनका बहुत अलग है और आपको बोलना है कि सर मेरा प्रेजेंटेशन में मेरे को नंबर मिलेगा क्या. तो आप इन दैट केस दोनों का आंसर और क्वेश्चन पूरा भेजिए, तो हम लोग क्लास में उसको डिस्कस करेंगे सर. बिकॉज नहीं तो एक एक देख के क्या होएगा. अगर आपको समझ में आ ही गया तो कोई डाउट तो है नहीं सर. तो और दूसरा भी ऐसा ही है क्या सर? हाँ हाँ. माने किसी में कोई डाउट नहीं है आपका? It नहीं is नहीं just नहीं, अभी that तक you नहीं. solved them, then you said. So I Yes, will sir. say that you do one thing. Suppose you solved, you understood, but still you have a question that I am writing like this, they are writing like this, whether I will get marks or not. If you have a genuine question when you are writing and you are understanding, I will get marks. सर मेरा राइटिंग उन लोगों के साथ एकदम मैच नहीं करेगा, मेरा राइटिंग एकदम मेरा है. मेरा राइटिंग ठीक भी है. उनसे कभी नहीं मैच करेगा, एकदम भी, जीवन में. वही आज हो हम रहा जो सॉल्व किया है वो लोग का जो वर्किंग नोट है हमारे से थोड़ी ना मिल रहा है एग्जैक्ट. वो जो पहला लाइन लिखा, हम बाद में लिखा, ऊपर हाँ. लिखा, नीचे लिखा हो कुछ, वो तो अलग ही रहेगा सर. वो तो कभी भी नहीं मिल सकता है. तो उसका टेंशन मत लीजिए. आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है कि मेरा लिखने से मेरे को नंबर ही नहीं मिलेगा, तो आप वो क्वेश्चन, उसका अपना आंसर, इंस्टीट्यूट का आंसर, तीनों एक जगह कॉपी पेस्ट करके हमको दीजिए. तो उसमें आपका भी भला होएगा और अदर स्टूडेंट का भी भला होएगा. वो हम लोग को चाहिए. इफ समथिंग लाइक दैट. ऐसे तो नॉर्मली कोई मतलब नहीं है ना सर. आप कर ही लिए तो क्या देखिए उसमें. नहीं, देखने का कुछ नहीं था, जस्ट एक बार मतलब हाँ, वो आप ठीक पर्सनली है. देखे तो कुछ. अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोमेन दे का है, लेकिन सोमेन दा हम एक बार पढ़ा था, हमारे तो ऊपर से चला गया. बोलना क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली हम लास्ट पैराग्राफ समझ रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग द एक्सप्लेनेशन विच यू हैव गिवन. सो फॉर दैट रीजन यू आर रिक्वायर्ड. I have come across a particular issue in my present organization relating to revenue recognition. We are having some employees, sales, quality, marketing, SCM, product development, etc., who are working globally sitting in India under our company payroll throughout the year. We generally charge back this expenditure to our group as export invoices as we are getting revenue in foreign currency and considering foreign services provided to global locations. We generally raise invoice once in June, July, August in every year, but book monthly provision receivables based on
pro rata monthly expense plus 5% 6% markup till invoice raised. We reverse this provision in books when we book actual invoice which reflects in our sales register. We are having financial period January to December. Hence, in January to December, there is no provision in the books. As on 31st December, an invoice value is there as accounts receivable. ये वाला लैंग्वेज का मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बट रुकिए एक बार, लास्ट ये जो सेंटेंस लिखा, फिर इशू इज व्हेन वी आर preparing tax accounts in March of the financial year, there is provision value from January to March based on 3 months, based on pro rata expenses plus 6%. But IT department is allowing revenue based on invoice sales register and not based on provision. Kindly advise whether our treatment are correct both for financial accounting and tax accounting. मेरे को जो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में बहुत सारा ब्रांचेस या अलग अलग सब्सिडी ग्रुप कंपनीज होता है. जैसे टाटा का ही बात कर लीजिए, टीसीएस, टाटा पावर, ये सब सबके लिए काम करते हैं. आईटी का काम सभी के लिए कर रहे हैं. सो टाटा पावर एंड टीसीएस आर टू सेपरेट कंपनीज. टाटा पावर, TCS is doing anything for Tata Power. They are charging some remuneration which is cost plus markup. वो उन लोग अपना फिक्स करके रखा होगा, आप लोग भी फिक्स करके रखे हैं. अब काम साल भर होता है, but you raise a bill one time July, August. So when you are preparing your books of accounts, that is, you are preparing your books on December, say 2024. The bill is raised in July, August, say August. So October, November, December, January, December, 4 महीना, 4 months का बिल रेज नहीं किया, लेकिन काम तो कर दिया ना. तो काम कर दिया तो आप उसका प्रोविजन एस्टिमेटेड इनकम बनाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंटिंग बुक्स में और रिसीवेबल बोल के बुक्स में दिखा देते हैं. इनवॉइस नहीं रेज हुआ है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न लगाने जाते हैं मार्च महीना में, तो मार्च महीना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल सेल उसी को मानता है जो इनवॉइस रेज हुआ है. जो आप प्रोविजन बना के रखे उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम नहीं मानता है. अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम नहीं भी माने तो भी जनवरी से मार्च का इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी तो आया है, तो इनकम टैक्स में आएगा ही ना. कब? जब जुलाई अगस्त में उसका बिल बनेगा नेक्स्ट ईयर. यानी कि इट्स अ टेम्पोररी एडजस्टमेंट्स. योर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम आर डिफरेंट, डेफर्ड टैक्स विल कम. और आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम दिखा रहे हैं एक्रूवल बेसिस. इनकम टैक्स इज शोइंग द इनकम कैश बेसिस. देयर आर मेनी क्लॉजेस where accrual and cash basis differences are there in the Income Tax Act. Income Tax Act is mixed principle, not pure accrual. But accounts is pure accrual. तो आप accrual principle follow कर रहे हैं, income tax cash principle follow कर रहे हैं, कोई problem नहीं है. But ultimately it will be reversed. You are preparing your books of accounts correctly and you are preparing your income tax payment as per Income Tax Act correctly. In the books of accounts for this item, deferred tax are coming every year, which you should be recording because it is going to be reversed in the next year. तो मेरे ख्याल से आप लोग कुछ गलती नहीं कर रहे, सब ठीक कर रहे हैं एकदम. जो होना चाहिए वही आप कर रहे हैं सर. ठीक है सर, वो तो मिल गया है सर मेरे को. ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट सही है, एकदम सही है सर. अकाउंट्स में आप 4 महीना काम किए, बिल नहीं भी बनाए, आप इनकम दिखा रहे हैं. इनकम टैक्स वाला बोलता है इनकम टैक्स तभी देंगे जब पैसा बिल बनाएंगे, बिकॉज बिल के इनवॉइस बेसिस. जब होगा. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यार? वो रिसीट बेसिस करने बोल रहा है, आप एक्रूअल बेसिस कर रहे हैं, तो बुक्स तो एक्रूअल बेसिस ही होता है ना सर. ठीक ही तो है. और ये वाला काम जवाब दे ही दिया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है. ये आपका लैपटॉप, वो जो कीबोर्ड है ना, वो ठीक से नहीं चल रहा होगा. उसमें जेन्युइनली प्रॉब्लम भी हो सकता है, या हो सकता है आपको नया मिला तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है. बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्सेल में प्लस माइनस नहीं होगा. वो लैपटॉप का जब स्विच दबा रहे हैं ना, वो ले रहा नहीं है. प्रॉब्लम वहां हुआ है सर, एक्सेल में प्रॉब्लम नहीं है सर. और कोई डाउट किसी का नहीं आया है? नेक्स्ट क्लास में अपने कंसोलिडेशन को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट, पीएल अकाउंट ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे. कुछ बच जाएगा, फिर भी होएगा नहीं पूरा, तो उसको सैटरडे को चलाएंगे. सैटरडे को लगेगा तो कुछ एक्स्ट्रा जो आईएफआरएस का है वो कर लेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट वीक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और जो इधर उधर बाकी है 3-4 क्लास में होएगा. अपना टारगेट वही है, 2021 तक सब खत्म करना, एंड देन फोकस ऑन द मॉक पेपर्स एंड एवरीथिंग.
तो आप लोग भी अपना रिवीजन पुराना वाला सब पढ़ पढ़ के रेडी हो जाइए। एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी, सो दैट यू कैन गिव मॉक टेस्ट एग्जाम्स इन द क्लास। मॉक पेपर करते वक्त आपको अच्छा लगे। सर वो सैटरडे क्लास मॉर्निंग या इवनिंग में होगा? मॉर्निंग तो नहीं होएगा, मॉर्निंग मेरा दूसरा बैच नया चालू हो रहा है सीएमए यूएस, तो आफ्टरनून टाइप होएगा सर। ओके, नो। हाँ सर। सैटरडे ऐसे भी मेरा ऑफ ही रहता है। नहीं, अगर ऑफ नहीं भी हो तो हम तो ऑन करेंगे इस सैटरडे खाली क्योंकि हमको लगता है हम लोग 20 तारीख के अंदर ही खत्म कर दे। वाई टू टेक 21, 22 फॉर दैट रीजन। तो वो नेक्स्ट वीक क्लास ले जाने के बजाय ग्रुप अकाउंटिंग यहाँ खत्म कर देंगे। उसके बाद जो छुटपुटिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये सब बाकी है उनको नेक्स्ट दिन करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे, ऐसा। ठीक है। सो एवरीबॉडी स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। पहले ये सारा दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, ये सब सॉल्व करेंगे जो कराया गया। फिर रोहित जी कुछ देखना है, नहीं तो कुछ और नहीं पढ़ना है। जो कराया गया पहले उसको करेंगे, फिर दूसरा सम करने जाएंगे, तभी मजा आएगा। अदरवाइज फीलिंग विल बी बैड। ओके, लिविंग फॉर टुडे भाई। चलिए 10-15 मिनट पहले खत्म हो गया, हम सोचा था 12, 12:30 बजेगा, 12 बज गया, ठीक है ओके, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। यस, गुड नाइट, थैंक यू।